A very warm welcome, children. Yesterday, first shift paper was moderately difficult or towards the side of the easiness. But today's paper, there was mixed response. Yesterday evening was again slightly tougher than the morning paper. But this paper is interesting. Interesting is what I would like to say than classifying it as difficult or moderate. Through the discussion, we will see whether it was difficult or lengthy. But as of now, I want to say it is a very interesting paper, and let's see how it is interesting. Stay tuned to a lot of fun, and let's solve all the questions, solve along with me, come up with your answers, and let us see different ways of solving the same questions wherever possible, and see how things can be made not very difficult inside the examination. So you are all there with me? First and the foremost question, f be a continuous function. Here it is not mentioned that f is a polynomial. What is said is simply f is a continuous function, assuming whatever students have given from memory. It is not mentioned that it's a polynomial function. It is said that it is a continuous function such that f of 3x minus f of x is always x. F of 3x minus f of x is always x. F of 8 is 7. Everything is fair in exams and war. Yes or no? So, what kind of function gives you x when you subtract f of 3x and f of x? If I have a quadratic, let's say, coefficient of x square, let's say it is 1. Here you have x square. Here you will have 9x square. Will they get cancelled? Sin 3x, sin x, will they get cancelled? No. So this cancellation happens, you will get this output as a linear only when f of x is linear. So you can go with that assumption. Let's say f of x is some mx plus c. So this will be 3mx plus c. F of 3x minus mx plus c is given to be how much? Identically x. Identically x. So cc gets cancelled here. 2mx is x and m is half. So what is your function? F of x is equal to x by 2 plus c. X by 2 plus c. How much should that c be? F of 8 is given to be 7. When I put it, will give me 7, 3. So this is your function. Simple, right? You could have made that assumption that it has to be linear, and only in that case this will be coming. In that case, this question looks very simple. How much is f of 14? How much is f of 14? Substitute 14 and you have the answer ready. Okay, fine, fun. If at all you have to do it technically, maybe in an advanced examination, there may be other possibilities, and he is asking about a lot of other things, then this is the way. It is a telescopic cancellation question. F of x minus f of 3x is f of 3x minus f of x is given to be x. In all such functional relation questions, what you try to do is, if the function is given to be differentiable, you will differentiate it. But here, nothing is mentioned about differentiability, yes or no? So, it is not a question on differentiation. We are not allowed to differentiate. Technically, we are not allowed to differentiate. So, what else will work? Same things will work which work in normal functional relations questions, replacing x with something else, something else, something else. So, I'll try to see some cancellations happening here. In place of x, if I want this cancellation to be happening, let me start with x here. To get x here, I have to go for x is equal to x by 3. F of x minus f of x by 3 will be what? X by 3. If I continue the same thing, f of x by 3, if I want to get it cancelled, minus f of x by 9 is x by 9, which is x by 3 square. So on you continue. Towards the end, when n is infinitely large, you iterate this, repeat this for infinitely many long steps. When you add all of them, a lot of cancellations are happening. You will be left with f of 3x. And the last term here,
3 power would be how much? Infinitely large, right? X by 3 power infinitely large number is f of 0. So this is f of 0 is equal to, this is an infinite GP. You can see it is an infinite GP with first term x and common ratio 1 by 3. So this will be x by 1 minus 1 by 3. Okay. So you have simple relation. F of 0 from here you can find out by substituting something in place of x. Okay, f of 8 is given to be 7, so you can accordingly substitute so as to get 8 by 3 you have to substitute and get the value of f of 0 from here. So this is not a difficult question, I would say, but using this would have made your life easy inside an examination. Next question is again the number of ordered quadruples or four tuples, what you call. That means x cannot be replaced by y or y cannot be replaced by x. This order is also important. One equation is given and he is asking you solutions of 4 unknowns x, y, z, w. एक equation है, 4 unknown है. One equation, 4 unknowns. One equation, boundary value question or question based on range. Okay, so 4 variables, one equation, blindly it has to be question on range, boundary values, maximum, minimum values. Look at this fun with these numbers, 2 power sin square x, और कोई चारा भी नहीं है. This is what he has to give. There is no other thing in which a paper setter can set a similar looking question, which will have 4 variables inside one equation. 2 into 3 into 4 into 5. How much is it? Yeah, 10, 12, 120. 2, 3, 4, 5. What are the specialty of the numbers? Their product is 120. 120 is 5 factorial. You can see product of first 5 numbers here. Okay. So this will be greater than 120. Greater than ki baat chodo. This number will be less than or equal to 2 because sin square x, you know, maximum value is 1. Cos square y, maximum value is 1. Maximum value is 1, maximum value is 1. So maximum value of your left hand side, how much will that be? 120. Maximum value is 120. Can it be greater than 120? No. But this equation, it says it is greater than 120. Can it be possible? No. So this greater than is never possible. At the most, it can be equal to. At the most, it can be equal to. So when will this be equal to 120? Only when this is 1, this is 1, this is 1, this is 1. All the 4 numbers here have to be 1. When will sin square x be 1? When x is odd multiple of pi by 2. X has to be odd multiple of pi by 2. See how many odd multiples of pi by 2 are there between 0 and 10. Pi by 2, 3 pi by 2, so on. You can simply count. Cos square y, when will it be 1? When y is a multiple of pi. When y is a multiple of pi. See how many multiples of pi here are there between 0 and 10. Similarly, sin square z has to be 1. Same number. इसी को square कर दो. Okay, just square this. Cos square omega has to be 1. Same thing. Square this number. So multiply all this and you will have the number of ordered quadruples. Okay, so that is how you have to solve this question. Not at all a difficult question, very easy question. Only thing is you should not get worried by such big looking questions. Usually such questions will be very easy. Next question is a question on binomial approximation. Pretty easy. You have to borrow your result, which majority of your physics teachers use. 1 plus x whole power n is approximately how much? 1 plus nx. This is binomial approximation for you. We also use it in the chapter of limits. 1 plus x whole power n is approximately how much? 1 plus nx. So if you use that expansion, see this systematically. It will not take much time at all. 1 minus x whole power 5 by 3. This you are dividing. Dividing is something which I am personally not comfortable. So I will rather multiply. And in binomial expansion, approximation, this coefficient has to be 1. लेकिन यहाँ पे कितना है? What is it here? 4. So let me bring this 4 out. 4, if I bring it out of the root, it will be 2. It is in the denominator, so 1 by 2. Now what am I left with? 1 minus x by 4
In the denominator, it was power half. So if I bring it to the numerator, it will become power minus half. Okay, what I simply did is I brought this 4 out. It became 1 by 2. I took this to the numerator. It is 1 minus x by 4 power half in the denominator. So in the numerator, it will be minus half. Okay, so let me simplify this. What is this with binomial approximation? 1 minus 3x by 2 plus 1 minus 5x by 3. This I am multiplying it by. What is this with binomial approximation? 1 plus x by 8. 1 plus x by 8. This is pretty simple, right? 2 I can take common. 2 and 2 get cancelled. 1 minus 3x by 2 minus 5x by 3. How much is it? 9, 10, minus 19 x by 6. But I have taken 2 common. So it should be by 12. 1 plus 1 is 2. I have taken 2 out. This is 9 plus 10. 19 by 6. Because I have taken 2 out by 12. Multiplied by 1 plus x by 8. So simply in this product, approximately what will this be? Just focus on 1 and the x term. 1 plus. So A is automatically there for you. 1. B, x term, what will it be? X by 8 minus 19x by 12. X square term you can ignore because we are up there to x. So somewhere it has to be mentioned for small values of x. That is what is given. X is pretty close to 0. X is tending to 0. That is when we can use this approximations. Okay, so you can happily ignore the remaining terms. So this will be your final approximation, and from there you get the values of A and B. So not at all a difficult question and not much calculation intensive as well. So first 3 questions, fortunately we had easier questions. Let us see if the same is going to be in next set of questions. F of x is given. It is given to be a polynomial. Then find the value of this bulky expression. 265 is given. So probably this would have been a numerical question. This would have been a numerical question, not an integer question. Fine. Even if it is a options question, then also it is fine. Doesn't make any difference to us in terms of solving. So what is this? 265. Identify this question properly. Limit h tending to 0. See, h power 4 and 3h square are both there. And h is infinitesimally small. So in this ratio, when h square is there, h power 4 will be infinitely many times smaller than h square. Yes or no? So h power 4, even if I don't write, nobody will ask me. I will ignore that. H power 4. Okay. H square, 3h square. Then I have sine 5h. Sine 5h by h will be 5. Sine 5h by 5h as h tends to 0 will be 5. So happily I can write this sine 5h. Instead of writing that sign, I can write it as 5h, equivalent infinitesimal. Okay. Then I have f of 1 minus h minus f of 1. ये कहीं देखा हुआ लग रहा है. कहां पे देखा हुआ लग रहा है? Where did you see such kind of an expression? F of a plus h minus f of h divided by h. It is nothing but limit h tending to 0 is nothing but f dash of a. So ye h, one h is getting cancelled here. The other h, if I bring it down, then this looks like f dash of h, but there is a minus sign. I have to adjust that minus sign. Okay, so this is what f dash of 1 for you. F dash of 1 for you. So whole thing is simply 265 divided by 5 multiplied by 3, and this expression is how much? F dash of 1 with a minus sign. F dash of 1 with a minus sign. Now how do I get f dash of 1?
सिंपल फंक्शन इज गिवन एफ ऑफ एक्स, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो 30x पावर वॉट एवर, मुझे तो 1 ही चाहिए एफ डैश 1, सो एक्स पावर वॉट एवर उसमें 1 लगा दो तो 1 ही हो जाएगा। तो 30 माइनस 7 8 56, इसको डिफरेंशिएट करो, व्हाट इज दिस 30x पावर 5, 1 सब्स्टिट्यूट करने से कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 इंटू 21 63 plus 2 into 3 6. This quantity is your f dash of 1. Very simple. बस निकाल दो, यहाँ पे लगा दो, you have your answer ready. So this is again a very simple question. Only thing is limits में you have to identify that this is nothing but your f dash of 1 definition, except for there is a minus sign in between. Okay, so that was also not at all a tough question, and it was a pretty easy question. Those of you who have you're thorough with conceptual knowledge. Look at this question. The tangents at P2, 3, the tangents at P2, 3 meets the curve again at P2. The tangent at P2 meets the curve again at P3, and so on. And so on. If the sum of the ordinates of P1, P2, P3, probably this is P1 for you. Okay, this point is P1. The tangent at P1 is meeting the curve again at P2. This is a cubic curve, 3y is equal to x cube plus 1. Tangent at some point is meeting again at P2. P1 is meeting at P2. Tangent at P2 is meeting the curve again at P3. Tangent at P3 is again meeting the curve at P4, so on and so forth. If the sum of the ordinates at P1, P2, P3, so on up to P60 be अच्छा कुछ दिया हुआ है BS, then what is S plus? Okay, that will all be taken care in the simplification. Let us understand this question first. Tangent for a cubic curve. What do you mean by tangent? If a line is touching a curve, when you solve that line with the curve, you will have a repeated root. Yes or no? You will have a repeated root. So let our first tangent line be y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. So let me solve that line with this curve. What do I get? X cube plus 1 is equal to 3 into mx plus c. Fine. What are the roots of this? One root is x coordinate of this point, x1. Another root is x coordinate of this point, x2. What will be the third root? There will be 3 roots for this. What I am doing is I am solving this tangent line. I assume this tangent line to be y is equal to mx plus c. I solve this line with the curve, cubic polynomial. I will get 3 roots for this because it is a cubic polynomial. I have to get 3 roots. ये किसका root है? x1. You know P1 is a point common to both curve as well as the line. Another root is x2 because P2 is again point of intersection of the tangent line and the curve. What is the third root? That is what you need to tell me. What is the third root? Perfect. Because this is the tangent line, this has to be a repeated root. So third root is again x1. What are the roots of this? x1, x1 and x2. इसमें एक beauty देखो. There is x square term which is missing. There is x square term which is missing in this question. So what can you say? Sum of the roots is 0. So x1 plus x1 plus x2 will be equal to 0, or x2 will be minus x1, 2 times of it. x2 will be minus 2x1. Similarly, if I repeat the same thing at P2, now roots will be x2, x2 and x3. Same equations. Then what do I get? x3 will be equal to minus 2x2. x4 will be equal to minus 2x3.
so on. So what can you say? X1, X2, X3, so on are in GP with common ratio how much? -2. With common ratio -2. R is equal to -2. And what is the first term? X1 is given to us 2. X1 is given to us as 2 inside the question. Now come to the question. What is he asking? Sum of the ordinates. Sum of the ordinates. Sum of the ordinates is I want. So I'll erase everything. What I simply got is X1, X2, X3 are in GP with common ratio. R is -2. And first term X1 is equal to how much? 2. That is given in the question. This is what we got. What I want is Y1 plus Y2 plus so on up to Y60 is what he is asking. Okay, Y60 is what he is asking. Now what are these? Y1, Y2, Y3, so on. They're all X1 cube plus 1 by 3 is Y1 plus X2 cube plus 1 by 3 is Y2, so on up to X60 cube plus 1 by 3 is Y60. This is what we want. Now if X1, X2, X3 are in GP, X1 cube, X2 cube, X3 cube, so on will also be in GP, yes or no? And if common ratio of this GP is R, common ratio of this GP will be R cube. If first term of this GP is A, first term of this GP will be A cube. Yes or no? And by 3 is also there. Anyways, whole divided by 3 is what I will write. And how many such ones are there? 60 ones plus 60. And what I want? Sum of X1 cube plus X2 cube, so on up to X60 cube, which is sum of 60 numbers in a GP whose first term is 8. A into R power n. Common ratio is how much? -2. Power n, how much? Power 60 minus 1 divided by R minus 1, which is -3. Yes or no? Now you can relate all these numbers. Sorry. First term is 8. Common ratio of X1 cube, X2 cube, X60 cube. How much is that? R cube will be the common ratio. R cube will be the common ratio for this, which is -2 cube or -8. Okay, so -8 power 60 you have, which is same as 8 power 60. 8 is how much? 2 cube. So 2 power 3 whole power 60. 2 power 180 minus 1 divided by -3 multiplied by 8 plus 60 by 3 will become how much? 20 outside, and 3 I can write it here. This will become 9. This will become 9. Fine. Now almost everything is set. Yes or no? 2 power 183. How will I get? This is 2 cube. This is 2 cube. Rest everything is almost set, and from here you can happily do the question. So what is that you need to identify in this question? That X1, X2, X3 are in GP with common ratio -2. And once X1, X2, X3 are in GP with common ratio -2, then automatically the ordinates also, they will be related to a GP. They're not directly in a GP, but they're a GP plus 1. So happily you can do this question. So not a difficult question, but definitely I would say it is very good conceptual question, and definitely such type of questions can be expected in your advanced examination. Okay, then you have permutations question. From a group of 10 boys, B1, B2, so on up to B10, and 5 girls, G1, G2, so on up to G5, find the number of ways of selecting a group of 3 boys and 3 girls, 3 boys and 3 girls, such that B1 and B2 are not together in the group. B1 and B2 are not together in the group. So whenever you are getting these permutations questions, you are
getting basic counting questions. So you will not get conceptually difficult question in permutation. So basic जो CBSE textbook के लिए पढ़ते हैं, that is more than sufficient. Go through your NCERT textbook questions or your board level questions. That will suffice for your JEE main preparation, not for advanced preparation, but it will suffice for your JEE main preparation. So how to do this question? इसमें क्या दिया हुआ है? B1 and B2 should not be together. अगर लेना है तो दोनों में से किसी एक को ही लेना है, ये नहीं तो दोनों को छोड़ देना है, बट दोनों को साथ में नहीं ले सकते. B and B2 are not together in the group. ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं. You are ignoring B1 and B2 both. You are ignoring B1 and B2 both. B1 and B2 को छोड़ दिया है तो how many boys you have? 8 boys. And इसमें से कितना चाहिए? C3. And how many girls are there? 5 girls. उसमें से कितना चाहिए? 3 we need to select. So how many ways you can select 3 boys and 3 girls from 8 boys and 5 girls? 8C3 into 5C3. Or का मतलब है प्लस इन दोनों में से किसी एक को चुनूंगा. I will select any one of B1 and B2. Whom you want to select? You can make the choice in 2 ways. 2C1 ways. You can choose whether you want to select B1 or B2. And having chosen one of them, और कितने boys चाहिए? Total I wanted 3 boys. Now I have already selected one of the 2. I want 2 boys more from B1 with B2. Already they are considered. बाकी बचे 8 बच्चों में से you have to select 8C2. And girls again, poor girls, they don't have any constraint. 5 girls are there and you can choose any 3 among them in 5C3 ways. Okay, so this will be your final answer. Very simple question, and similar such questions are there in your textbook also. So this is something which you could have happily done. This somehow I am not comfortable looking at such lengthy inverse trigonometric questions, but you don't have a choice, and such questions are being asked regularly, so you have to practice doing them. इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. Simply you have to do some simplifications because you are being asked tan of. It is better you have everything in terms of tan inverse. So first and the foremost, I want to convert this into tan inverse. कैसे convert करूं? Tan inverse of secant inverse. How do I convert it into tan inverse? Which method you want to use? Triangle method, or what is that you want to use? Yes. Tan inverse and tan theta and secant theta, they are related as tan square theta is equal to secant square theta minus 1. So this will be root over square of this number minus 1. इसका square कितना होगा? 5/4. minus 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1/4. उसका रूट कितना होगा? 1/2. So directly you can write this as tan inverse 1/2. कैसे निकल के आया? Secant inverse x will be equal to tan inverse root over x square minus 1. ये किस प्रॉपर्टी से आया? Secant square theta minus 1 is tan square theta under root is tan theta. ठीक है. Similarly, you can convert any inverse trigonometric relation into any other inverse trigonometric relation. एक और एग्जांपल दे देता हूँ, cos inverse x. But there will be definitely conditions. Inverse trigonometry is all about domain and range. So this will not be always true. This will be true with certain conditions. Cos inverse x, what will it be in terms of sin inverse x? How is sin square theta related to cos square theta? It is root over 1 minus cos square theta. So this will be root over 1 minus x square. This is how you can convert one inverse trigonometric function into another. So this will be tan inverse 1/2 plus यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. So instead of using 2 tan theta formula first, I want to add these two things and then multiply by 2. So 2 tan inverse A plus tan inverse B में क्या होगा? Tan inverse of A plus B by 1 minus AB. उसमें कंडीशंस होंगे, लेकिन ये काफी छोटे नंबर है. xy is less than 1. xy is less than 1. So tan inverse x plus tan inverse y, what will it be? Tan inverse of x plus y by 1 minus xy. So this will be tan inverse of x plus y.
इन दोनों का सम कितना होगा 5 + 8 13 by 8 5 40 40 कट जाएगा तो मैं बाद में लिखूंगा by 1 minus 1 by 40 तो 40 minus 1 कितना हो जाएगा 39 by 40 कट जाएगा तो 13 goes 3 times. So this is 2 tan inverse 1/3 2 tan inverse 1/3. तो ये सिंप्लीफिकेशन का ही चक्कर है और कुछ भी नहीं है. What is your question? Now how will you write 2 tan inverse x? It is tan inverse 2x by 1 minus x square. So ये कितना हो जाएगा tan inverse 2/3 by 1 minus 1/9 which is 8/9 तो 6/8. ठीक है, you do your math. It's a very simple part. Now you can happily apply tan of a plus b formula. Tan of a plus b is tan a plus tan b by 1 minus tan of tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. Happily, simply you will get this question. So nothing conceptual difficulty is not there in this question. Only thing is you have to simplify things properly. So till here paper was very easy. And let us look at your next question. How to do such question? Let this is one term 3 ये ब्रैकेट में कितने टर्म्स है 3 how many terms are here 5 first group had one term second group has 3 terms third group has 5 terms next group will be having 7 terms so nth group will be having how many 2n minus 1 terms odd number of terms 1 3 5 7 so nth sequence will have how many odd number of terms. Question क्या है then the sum of elements in the 11th set will be. अब 11th set शुरू होने से पहले 11th set में होंगे कितने एलिमेंट्स 11th odd number yes or no फर्स्ट सेट में एक था सेकंड सेट में 3 थर्ड सेट में 5 so 11th set how many numbers will there be it will be your 11th odd number. What is your 11th odd number 2n minus 1 is the nth odd number so 22 minus 1 there will be 21 numbers here 21 numbers here. अब इनका सम पूछ रहा है he is asking sum of all these numbers. Okay ठीक है. Now शुरुआत से स्टार्ट करेंगे 1 फर्स्ट एलिमेंट इज 3 फॉर यू सेकेंड सेट में कितना था 6 + 9 + 12 प्लस थर्ड सेट में कितना था 15 + 18 + so on. Then you will have your 10th set. Now up to 10th set how many numbers you had 1 + 3 + 5 so on 10 odd numbers you have to add. So very important result you have to remember is sum of first 10 odd numbers is n square. In yesterday's first session paper also you had this result वहां पे bn n square directly लिखे थे because it was sum of first 10 odd numbers. So sum of first 10 odd numbers is always n square. This is something which you have to remember. So 10 brackets तक ये कितने terms होंगे 10 square 100 terms होंगे. And if you look at it up to 11th till the end of 11th bracket how many terms will be there 100 + 21 or simply after 11 brackets it will be 11 square number of numbers 11 square is again 121. तो यहां से यहां तक कितने होंगे 121 numbers. Now what you want is sum of this particular bracket sum of elements in the 11th bracket. Sum of elements in the 11th bracket कैसे आएगा you count sum of all these 121 numbers till the end of your 11th bracket उसमें से remove sum of these 100 elements that will be your sum of all the terms in the 11th bracket. ठीक है so sum of 121 terms of this sequence कौन सा sequence है 3 6 9 12 so on. If you take 3 common they're all natural numbers so you want 3 into
1 plus 2 plus so on up to 3 plus so on up to how many numbers? 121 numbers. This will be sum of your terms up to the end of 11th bracket. इसमें से निकालना क्या है? You have to remove sum up to first 10th bracket. How many terms? 100 terms. 1 plus 2 plus 3 plus so on up to 100. Very simple question. Yes or no? Sum of 121 natural numbers. If you want to do the math, you can do. Otherwise 100 तक cancel हो जाएगा. शुरुआत कहाँ से होगा? 101 एलिमेंट से. 101 से लेके 121 तक सम कैसे निकल के आ जाएगा? Simple AP 100 plus 121 by 2 into how many numbers are there? 21. Whole you multiplied by 3. आ गया सम. और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का. So this is not at all a difficult question, and this is something which is there in your previous year archives. ये question कहीं बार पूछा गया तो so this type of questions you have to practice a lot. Next question, dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x. Okay, so what kind of a equation is this? Yes, quickly. What kind of a equation is this? Tell me quickly. Yes, quickly. This looks like a linear equation, right? This looks like a linear differential equation. So solve this linear differential equation and you want maximum value of y of x. Maximum value of y of x कैसे आएगा? बस dy by dx equated to 0 and you will get it, right? dy by dx equated to 0. वहीं पे इसी equation में dy by dx you can put it and you will get condition between y and x. But you also need to solve this equation. You also need to solve this equation. So linear differential equation, do I need to solve or you want to solve it by yourself? कैसे? You have to multiply by integration factor. Multiply throughout by integration factor. What will be your integration factor? E power log of e power integral of 2 tan x dx. Yes or no? Y coefficient will be 2 tan x. So e power integral 2 tan x is something which you have to multiply. And what is integral of tan x? Log mod secant x. तो ये कितना हो जाएगा? E power log mod secant x का square. तो log secant square x. E power log of anything is x itself. So this will be secant square x. Your integration factor will be secant square x. And secant square x, when you multiply by sin x, what will it become? Secant x into tan x. Uska bhi integral simple hai. So all in all, this will be a very simple integral. You can happily find this differential equation. You can solve this differential equation and finally put dy by dx is equal to 0. Not at all a difficult question for you. This question I found it very interesting. You have to find a 5-digit number. Product of the digits is 36. Let the digits be A, B, C, D, E. Let this be the number A, B, C, D, E. This is a 5-digit number. Now, product of these digits A into B into C into D into E. This product you want it to be 36. This product you want it to be 36. So he's asking how many ways you can form such a 5-digit number. Now 36 should come as product of certain digits, yes or no? So what all possibilities are there? 36 first you have to prime factorize. 36 is 9 into 4, which is 2 square into 3 square. 9 into 4. तो इसमें से कुछ 2s होंगे, कुछ 3s होंगे. When you prime factorize all these numbers, it will have some 2s and some 3s. Altogether, you need to have 2 2s and 2 3s so that the product becomes 36. Okay. Now, what all possibilities are there? One, you can do it by straight counting. Second one, you can also use multinomial theorem here. Multinomial expansion is also advisable. I prefer
doing it by multinomial theorem or what figure method से कर सकते हैं, multinomial theorem से आराम से कर सकते हैं. Let us see how. So first normal counting से अगर करना है तो you will have to list out all possible cases how you are going to get 2 square and 3. For that, what all possibilities are there? Now automatically sum of the numbers should be 1 and remaining can give you the 36. So let's say, is it possible to have no 1 here? Maximum एक element सबसे minimum कितना हो सकता है? 2, 2, 3, 3. सबसे छोटे नंबर अगर 1 ना होना हो तो this can be 2 or 3, 2 or 3. Only 2s are permissible. 3 2s नहीं हो सकते. तो बचा 3, 3 and E is again becoming 1. So it is impossible digit should be 1. If one digit is 1, automatically rest of the elements should be 2, 2 and 3, 3. So numbers will be of the form 1, 2, 2, 3, 3. How many of them will be there? 5 factorial by 2 factorial into 2 factorial. These many numbers will be there with the digits 1, 2, 2, 3, 3. Then let's say there are 2 ones. Let's say there are 2 ones. Now what all possibilities are there? ये एक already 1 है and दूसरे नंबर को भी 1 कर सकते हो. दूसरा नंबर कौन सा 1 करना है? या तो 2 वाला कर सकते हैं या 3 वाला कर सकते हैं. मान लो 2 वाला गया. 2 can go with 2 now or 2 can go and join with 3 now. So what all types of numbers will come? 1, 1, 3, 3, 4 or 1, 1, 2, 6, 3. ठीक है? Any other possibility? No. Then 3 ones. 3 ones वाले कितने हो जाएंगे? ये how many permutations will be there for this? Same thing again, 5 factorial by 2 identical ones and 2 identical 3s. So this will again be 5 factorial by 2 factorial whole square. Next part, these 3 are different. 5 factorial by 2 factorial. Next, 3 of them are ones. 3 of them are ones. And इसी case में 2 ones में it would have been 3 which would have made into 1. ठीक है? वो possibility कौन सा है? 1, 1. ये 3 को 1 बना देता हूं. This 3 can go with 3, 9, 2 or this 3 can go with 2, 1. ये 3 ही रहेगा. This will be 6. So 2, 6, but this is the same repetition of the same set. Yes or no? So this is not a different case. So either 2 goes with 3 or 3 goes with 2, it will lead the same thing. So now you have a different case 2, 2, 9. This is also a possibility. ये कितने होंगे? 5 factorial by 2 factorial whole square. So same thing. ये 3 बार आ गया अब तक. What is the last case? 3 1 होंगे. 3 1 के साथ क्या क्या हो सकते हैं? Remaining 2 elements have to be 4 and 9. 4 and 9. So triple 1. Can there be triple 1? Double 6. ये भी हो सकता है. Yes or no? 9 4s are 36 or 6 6 are 36. 36 in how many ways you can write it as 2 numbers, product of 2 numbers. या तो 4 9s are या 6 6 are. 8 into 2 is not possible because 8 cannot be a digit. Okay, so these are all the possibilities. इसके according कितने आ जाएंगे? 5 factorial by 3 factorial एक बार and 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial. So this is how you can count and do, but this is a lengthy method, so I don't want to focus on this particular method at all. I don't recommend doing this method in the examination. What you can do here is A, B, C, D, E, product of these digits should be how much? 36. And 36, how are you writing? 2 square into 3 square. Now, A, B, C, D, E are like 5 persons. Okay? See them as 5 persons. Now you have to distribute 2 identical 2s among these 5 persons.
In how many ways you can distribute two identical 2s among 5 persons? Baker method. 2 plus 5 minus 1, C 5 minus 1. Yes or no? This is how you can distribute two identical 2s among 5 persons. Similarly, in how many ways you can distribute two identical 3s among 5 persons? 2 plus 5 minus 1, C 5 minus 1 again. Is this your answer? No. Why not? मान लो ये सारे 2s and 3s have all gone to A. What will become? A will become how much? 4 into 9, 36. Can A be 36? No. Why can't it be 36? Because it is a digit. At the most, it can be how much? 9. A digit cannot be 9. तो इसमें फालतू के केसेस आए जहां पे these numbers are more than 9. We have to remove all those cases. So 9 से ज्यादा आने के लिए number, what all cases have to be considered? When will a number digit become more than 9? When it is getting 2 2s and 1 3. 4 3s are 12. Yes or no? ये basic minimum number है which is crossing 9. Yes or no? Slightly larger number is 3 square 9 into 2 18. And एक और possibility है when a number is getting both the 2s and as well as both the 3s. So a digit will exceed being a 9 when you give it 2 2s and 1 3 or 2 3s and 1 2. Okay? And of course the case where it is getting both the 2s as well as both the 3s. So these three cases I have to subtract. So you subtract the case where you are one of the digits, which one you select that one. In how many ways? 5. See, 1 ways you can select a digit, and that digit in this distribution is exceeding 9. What all cases are possible? First case is, let's say I selected B, giving it 2 2s and 1 3. बचा क्या? एक और 3. किसको दे सकते हैं? या A को, या C को, या D को, या E को. इसको नहीं देंगे बस. So how many ways I can distribute that? 4 ways. That is the way in which you can distribute 2 square and 2 2s and 1 3 to one single person. Next case which you need to remove is this one, where one of the digits is 3 square into 2. 3 square into 2 होने के बाद which one you select the digit? 5 3 1 ways में. Let's say again I select B. So you give 1 2 to this and 2 3s to this. बचा क्या? एक और 2. वो किसको दे सकते हैं? या A को, या C को, या D को, या E को. In again 4 ways. Plus last is the case where both the 2s and both the 3s are you are giving to one of them. Rest everything will be 1. वो कितने cases होंगे? बस 5. So 5 C 1 ways, that is 1 way inside. Okay, you just have to select. There is only 1 way of giving it. बस दे दो, बाकी सब 1 हो जाएंगे. ठीक है? So this is what you need to subtract. ये कितना हो जाएगा? 6C. 4 is 6C2 multiplied by 6C2 minus how much is this? 9 into 5, 45. So 45 you have to subtract from this number. That will be your answer. Very simple. Not at all calculation intensive. But the only thing is you need to learn multinomial theorem in the right way. Once you are done with that, you will be able to do such questions. Usually such type of questions will be asked in advance. So definitely you will be able to do such questions. So permutations में कभी-कभी थोड़ा difficult question भी पूछा जा सकता है, but this question you could have done it with plain counting. Only thing why I was not suggesting that method is थोड़ा calculation होगा उसमें, and there is a chance that you may miss 1 or 2 cases unless you are not counting it properly. So between area bounded by the curves y is equal to 1 and y is equal to 3 and the curve y power a is equal to x, कैसे होगा? y is equal to 1 is this line, y is equal to 3 is this line, 2 parallel lines parallel to x-axis. X is equal to y power a. How will it be? Passing through origin. Maybe some curve this way. Its curvature doesn't matter. This is the area which we are focusing on. How much will be the area? I will integrate along y-axis. Integral y1 to y1 is how much? 1 to 3 x dy. X is what? Y power a dy. Can we expect a simpler question? This is given to be how much? 364 by 3.
What will this come out to? Y power a plus 1 by a plus 1. So 3 power a plus 1 minus 1 by a plus 1 is given to be how much? 364 divided by 3. Okay. So which power of 3 is closer to 361? 3 powers एक बार देखेंगे by inspection if I can find, because there is no actual way of solving this question. एक कौन सा है? Algebra and exponential combination. So only way to solve this equation is by inspection, and for that you need to locate powers of 3 here. Powers of 3 what are they? 3, 27 तक पता है, 81, 243, 243 से ये बड़ा है, 243 के बाद immediately आ रहा है 721. Can you relate this with 721? How much is this? 2 times 728 by 6. Yes or no? Now you can see 3 power 6 is how much? 729. Yes or no? Minus 1 is 728 by a plus 1, 6. So a plus 1 is equal to 6. This is also 6. A should be how much? 5. Just by inspection you can find that a is equal to 5. This is how you can solve this question. So not a difficult question at all, and happily you will be able to solve such questions. So thing is, till now we were able to find some difficult questions, but they were few. There are also questions which were very easy. So whenever you find a paper to be lengthy or difficult, what matters is choice of questions. There will be a lot of questions which will be easy. So carefully you have to choose those easy questions. Again, this is a very easy question. What is this? He's asking you to solve a line with a plane. This line and plane, they intersect. How do you solve line and a plane? Equate this to lambda. Let this be lambda. So any point on this line can be written as 4 lambda minus 1, comma, 3 lambda plus 2, comma, 4 lambda plus 1. Yes or no? This is how you can represent any point on this line. Now, what is speciality of the point on the line which you are talking about? It is also a point on the plane. So simply take this point and substitute here and solve. Bas. Substitute this point here, get the value of lambda. You got coordinates of p. P पता है. उसके बाद क्या पूछ रहा है? एक भयंकर क्वेश्चन पूछ रहा है. What is the distance of p from this q? Distance formula. Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Yes or no? Can you expect a simpler question? Not at all. So 3D questions are usually simple. 3D questions are usually simple. Practice on 3D. Comfortably, you will be able to solve those questions. A is a 2 by 2 matrix. Det A is equal to minus 1. Then you have this expression A plus I multiplied by adjoint of A plus I is equal to 4. He is asking you to find a trace of A. There is no property or formula for trace. So whenever he is asking trace, simply you have to assume the numbers and add the diagonal elements. Yes or no? Trace is sum of all the diagonal elements, and that makes this discussion easy because it is a 2 by 2 matrix. Let this matrix be A, B, C, D. What will be trace of this matrix? Let A be A, B, C, D. Trace of A will be what? A plus D. To find A plus D, some information is given here. Before that information, det A is given to be minus 1. Det A, if it is minus 1, what is adjoint of A? A inverse is equal to adjoint of A by det A. Yes or no? Det A is minus 1. So adjoint of A is equal to minus of A inverse, or A inverse is equal to minus of adjoint of A. तो इसको कैसे लिखा जाएगा? A plus I. I don't personally suggest converting into A inverse.
inside the classroom, but in examination, whichever works to you in a smarter way, that is what you have to use. Okay? Usually, I would have suggested you to go with the properties A into adjoint of A is equal to det A into IN. Why only this property? Why not in terms of A inverse? Because not all matrices are invertible. Singular hai ya nahi hai, non-singular hai, that depends on fate. Yes or no? Here, fortunately, det A is not 0. But it is not always the case that det A will not be 0. Or sometimes this information may not be given to you. And in that case, when that information about det A is not known, you cannot write A inverse. So you should always practice with adjoint of A. But in examination, do the one which is easy. Adjoint of A has to be replaced by minus of A inverse. There should be minus sign here. So A into A inverse is I, minus I, plus I gets cancelled. Then you have A. Then you have minus A inverse. This determinant is given to be how much? 4. A inverse is very simple. It is a 2 by 2 matrix. So adjoint of A kya ho jayega? Just interchange these elements. D, A, minus B, minus C. This is your adjoint. A inverse kya hai? Put minus sign here. This will be your A inverse. Find A minus A inverse. A minus A inverse will be what? A plus D. Yes or no? A plus D is coming to you. B minus B is 0. C minus C is 0. D plus A. So, what is this? Determinant of the matrix. A plus D, 0, 0. This determinant is given to be how much? 4. So, A plus D whole square is 4 or A plus D is plus or minus 2. So, trace of A is plus or minus 2. He's asking you modulus of trace A, which is 2. So simple question, not at all difficult. Each one of you should be able to do this question. N by n square plus k square. Can you see something here? Yes. What is that? Summation of a limit as a definite integration. Yes or no? If you take this n common, this is sigma k is equal to 1 to n. N square will come out, 1 n get cancelled. 1 by n will be left. 2 by 1 plus k square by n square. This 1 by n is your dx. This is 2 by 1 plus x square. K by n is your variable. K by n initially is 0 to 1. So this is a simple limit. Integral 0 to 1. 2 by 1 plus x square dx. Yes or no? Tan inverse x is the integral. 2 is there. Happily you can substitute 1. So this will be tan inverse x at 1 is pi by 4 multiplied by 2 is pi by 2. Tan inverse x at 0 is 0. So I need not do much calculations here. This limit will be pi by 2. Now what is the other function? This is again very favorite expression in your trigonometry. Root over 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. What is it? 1 minus cos theta, you will see it as 2 cos square theta by 2 sin square theta by 2. Denominator is 2 cos square theta by 2. Ratio is tan square theta by 2. Under root is mod tan x by 2. F of x is what? Mod tan x by 2. He's talking about derivative of this secant square. Everything is known. A is known. A is how much? Pi by 2. By 2 will be pi by 4. At pi by 4, he is asking you the value of derivative of this. So, pretty simple question. Happily, anybody could have done this question. Next, A is a complex number given to you, 1 plus 2i. So, I prefer to do this in coordinate geometry, not in complex numbers. I will also tell you how to do this in complex numbers. O is origin. OB is hypotenuse. OB is hypotenuse. So let's say this is B and this is O. A is the third vertex of this right angled isosceles triangle. So these two are equal. These two are equal. 45 degrees or pi by 4, pi by 4. What is given? A is given to be 1, 2. 1, 2. O is anyways origin. What is he asking you to find? Find a point B. Find the point B. There will actually be two possibilities, one that side and the other this side. There will be two possibilities for B.
but we want the one with real part of b less than 0. We want the one with real part of b less than 0. So you can happily do this in coordinate geometry also. You can also do it in complex numbers. If at all you have to do it in coordinate geometry, what is that you need to do? Let this point be alpha comma beta. Let this point be alpha comma beta. Now these two lines are perpendicular. These two lines are perpendicular. So what? Slope of this line multiplied by slope of this line is -1. You will get one condition in terms of alpha and beta. This distance is equal to this distance. You will get another condition in terms of alpha and beta. Solve them. You get a quadratic in alpha. Two values for alpha. But we want a quadratic. We want a root which is negative. So one root you ignore, other root you will have. That is simple way of doing it. If at all you have to do it in complex numbers, then let's say this is Z1 for you, this is origin and Z2. Apply rotation theorem. Apply rotation theorem. One possibility is clockwise this way and another possibility is clockwise this way. So mark this angle in counterclockwise sense. This is how the arrow will be. How will you apply rotation theorem? Mark this angle in counterclockwise sense. This complex number, this vector, what will it be? Z1 minus 0, which is Z1, divided by this vector Z2 minus 0 will be equal to how much? Ratio of this length in a right angle as well as triangle. What is this ratio? 1 by root 2 into e power this particular angle I pi by 4. You know what is e power I pi by 4? What is it? Cos theta plus I sin theta. 1 by root 2 plus I by root 2. So this is 1 by 2 plus I by 2. You want Z2. You know Z1. 1 plus 2i. So Z2 will be equal to 1 plus 2i divided by 1 plus I by 2. So 2 goes up. Very simple question. Yes or no? Directly you are getting Z2. So this is the best possible way. But only thing is both the possibilities are there. Plus or minus, you have to check which one will work. So plus or minus, you just check which one will give you real part of b as less than 0. So not at all a complicated question. Again, very simple question which you can expect in complex numbers. Binomial mean. Session 1 yesterday also had a question in mean and variance. Binomial mean is what? NP is alpha. Variance is what? NPQ is alpha by 3. So from here what you can conclude? Q is 1 by 3. Directly you can say this 1 by 3 is Q. Q is 1 by 3. If Q is 1 by 3, then P will be what? P plus Q will be 1. P will be 2 by 3. P will be 2 by 3. What else is given? P of x is equal to 1. What is probability of x is equal to 1? P of x is equal to R will be NCR. So NC1. P power 1. P is how much? 2 by 3 power 1 into Q power n minus R. Q power n minus 1. This is given to be how much? 10 by 243. 10 by 243. Again, this is a combination of exponential and linear. Second time we are having such question in our examination today. So you can only do it by inspection. This is n by 2 is there. 1 power whatever is 1. 3 into 3 power n minus 1 is 3 power n is equal to how much? 10 by, can you identify the number? 243. 243 is 3 power 4 is 81. 3 power 5 is 243. So n is how much? 5. You can just by inspection find out that n is 5. Now you have almost all the information about this binomial distribution. What is that he's asking you to find? Probability that x is 4 or x is 5. X is 4. What will be the probability? NC4, P power 4, Q power n minus 4, or the variable is 5, 5C5, P power 5, Q power 5 minus 5 is 0. What is your P? 2 by 3. What is your Q? 1 by 3.
substitute and get the answer. Very simple question. So not at all a difficult question. So you have to keep your cool in the examination. It's not that the papers are lengthy or difficult. Yes, they may be, but the choice of questions is something what matters a lot. Coefficient of x and x square in the expansion of, see, he is multiplying two binomial expansions together. 1 plus x whole power p into 1 minus x whole power q. What is it giving you? Coefficient of x. Coefficient of x. Coefficient of x, how will you get? One way of getting it is, take the constant term in this expansion, multiply by the x term here. Okay, what is constant term in this expansion? 1 multiplied by, what is x term in this expansion? Minus q. This is one x term. Or take the x term here. X term in this expansion is px. This px term multiply by constant here 1. So p minus q P is coefficient of x here multiplied by constant, that will give you coefficient of x in the product. Minus qx is the x term here multiplied by constant 1 here will give you x term in the product. P minus q is given to be how much? Minus 3. Then focus on x square term, coefficient of x square. How will you get coefficient of x square? 1 multiplied by x square term here. What is x square term in this expansion? QC2 x square, yes or no? So that will be QC2 for you. And this 1 in this expansion multiplied by x square term here, PC2. Or x here multiplied by x here. X term here is what? Px. X term here is what? Minus qx. So both of them when you multiply, minus pq. This is given to be how much? Minus 5. How have I got x square term? X square here multiplied by constant here, or constant here multiplied by x square here, or x term here multiplied by x term here. There are only 3 ways of doing it. Now, can you simplify this? PC2, what is it? P into p minus 1, that is p square minus p by 2. QC2, what is it? Q square minus q by 2. I'll multiply throughout by 2. Can you identify something here? Otherwise, this will give you a quadratic. If I replace q with p plus 3 or whatever, it will give me a larger quadratic. But I am trying to find some pattern here. What is this? P minus q whole square, yes or no? P square plus q square minus 2pq is how much? P minus q whole square, which is 9. So from this, what I am getting is P plus q, this part is how much? 9. If I throw it to the other side, minus 19, P plus q is 19. I have P minus q as minus 3, P plus q as 19. I can happily find the values of P and q. Just add them together. 2p is how much? 16. P is 8. And q is how much? P minus q is minus 3. So q is 11. So you have both the values of p and q. Now what is that you need to find? Coefficient of x cube. Coefficient of x cube, how will you get in this expansion? Either x cube term here multiplied by constant here, x cube term is PC3 multiplied by constant is 1, or x cube term here multiplied by constant, x cube term here, what will it be? QC3 into minus 1, minus QC3 into constant 1, or x here multiplied by x square here, x here multiplied by x square here will also give you x cube. X term here is what? P. X square here is what? QC2. These are the coefficients. Or x here and x square here. X here is minus q and PC2. So this is your
coefficient of x cube. You have the value of p, you have the value of q, simply substitute and get the result. That will give you the answer. So it is not difficult, but it is lengthy. Definitely it is a lengthy question. So you have to do a lot of calculations here. It is a lengthy question. This is symmetric form of a plane equation. Two planes are given. When two simultaneous plane equations are given, what does that mean? We are talking about the line of intersection of these two planes. Line of intersection of these two planes. Line of intersection of these two planes, how will you get it? There are 2-3 ways of getting line of intersection of two planes. I will tell you both the methods. X minus 2y plus 3z minus 5 is equal to 0. One method is, remember these methods because regularly these questions are being asked. Z0 substitute कर दो, एक point आ जाएगा. Z0 substitute कर दो, ये एक point आ जाएगा. X0 substitute कर दो, ये एक और point आ जाएगा line पे. When you know 2 points, how will you write line in symmetric form? X minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1. ठीक है, 2 पॉइंट्स निकाल दो. Z0 सब्स्टिट्यूट करने से एक पॉइंट आ जाएगा, X0 पुट करने से एक पॉइंट आ जाएगा, दोनों से सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगा. बट हियर आई डोंट वांट द लाइन, आई ओनली वांट इट्स अ डायरेक्शन. देयर इज अ लाइन पैरेलल टू, डायरेक्शन ही चाहिए. सो DRs ऑफ दिस लाइन are perpendicular to this normal and also perpendicular to this normal. So DRs of this line you will get it by cross product of these two normals. Cross product of these two normals. What are they? 1, 1, minus 1, 1, minus 2, 3. इससे you will get DRs of this line. ठीक है? And having got the DRs, what you want? This line is passing through this point, minus 1, 2, 3. I have a lines whose DRs are known to me, and I also know that it is passing through this point. A point is given 1, 4, 5. I have to find this perpendicular distance. अब perpendicular distance निकालने का तरीका बता देता हूँ. How to find this perpendicular distance? One method is take this vector, join these 2 points, you will get this vector. You also know DRs. You also know this particular vector. What is it? 3 plus 2, 5i cap minus j into 4 minus 4j cap k into minus 3k cap. Fine. You know this vector. Join these two, you will get this vector. Take projection of this vector along this vector. What will that give you? This particular length. This particular length is nothing but projection of this vector along this vector a dot b by mod b, where a bar is this join, b is this vector. A dot b by mod b से ये length निकल के आएगा. You already know distance between these 2 points. Distance formula से आ जाएगा. Use Pythagoras theorem. This distance is known. This distance is known. This distance is what you want. Pythagoras theorem will give you the result. Is it clear how to find the perpendicular distance? Alternate method is assume any other point. Find any other point. इस line पे put t is equal to 0 or t equal to 1 or t equal to 3. Other than this point, find one more point. Find area of this triangle. Vector method से आ जाएगा. ये vector cross ये vector से area निकल के आ जाएगा. ये distance is base. So half base into height will also give you perpendicular distance. So you can do any method. This is simpler. First one, take projection of this vector along this vector. You will get this particular length. This distance is hypotenuse. Use Pythagoras theorem to get the perpendicular distance. Very important. You have to remember it for both JEE as well as for your JEE main as well as your JEE advanced. This is again a very simple question. Integral f of x dx कहाँ से 3 to x is given to be how much? Y by x whole cube is given to be how much? Y by x whole cube. How to solve this? Differentiate on both sides. F of x is nothing but your y. F of x is nothing but your y. So differentiate on both sides. Newton limits y will be equal to y by x whole cube का derivative क्या हो जाएगा? 3 into y by x whole square into derivative of y by x into derivative of y by x with respect to x. With respect to x. How to solve this equation? Very tricky equation. Yes or no? Now, instead of doing this differentiation completely,
treat y by x as your variable. Treat y by x as your variable. I will not disturb this function. dx यहां पे लेके जाऊंगा. y से क्या हो जाएगा? 1y will get cut. I want to retain this y by x. 3 भी यहीं पे रखूंगा. तो what else is left? 1y got cancelled. x square में से एक x यहीं पे है, दूसरा x यहां पे आ जाएगा. Derivative of y by x. This is a very simple differential equation to solve. x dx का इंटीग्रल कितना है? x square by 2. t dt का इंटीग्रल कितना है? t square by 2. Will be how much? Some constant. This is equal to this plus some constant plus c. How to get that constant? Lot of information is given. F of 3 is 3. So if you put x is equal to 3 and y equal to 3, this equation should satisfy. So you'll get the value of c from there. उसके बाद क्या पूछ रहा है? y 6 root 10 substitute कर दो. He's asking you what is the value of x. You'll get a simple quadratic in x square. Solve it, and this is a wonderful question. But only thing here is you should know how to solve this differential equation. यहाँ पे थोड़ा patiently. First step is very easy. Everybody would have written it. यहाँ पे थोड़ा patiently देखा जाए तो you would have done this question. Next one is again a straightforward question. At alpha comma beta, tangent is perpendicular to this line. Means what will be slope of the tangent? Slope of the tangent is 1. Slope of the tangent is 1. Normally, what is the slope of the tangent? dy by dx से भी निकाल सकते हो. 2y dy by dx is 24. 12. dy by dx is 12 by y. ये कितना दिया हुआ है? 1. So y will be 12. Y coordinate will be 12. Beta is 12. Substitute beta, you will get alpha. Not at all a difficult question. You know alpha and beta. You know this point. You have to find equation of the normal. Very simple coordinate geometry question. Very simple coordinate geometry. Given two GPs, if GM of this 60 plus n number, 60 plus कहाँ से आ गए? यहाँ पे 60 नंबर से, यहाँ पे n नंबर से. So इनका GM के बारे में बात किया जा रहा है. GM of 60 plus n numbers, what will it be? First their product, 2 power 1 into 2 power 2 into 2 power 3, so on up to 2 power 60 into 4 into 4 square into 4 cube into so on up to 4 power n. GM में कितना आ जाएगा? Power 1 by 60 plus n. ये कितना दिया हुआ है? 2 power 225 by 8. इसमें कुछ डिफिकल्टी है? Write everything in 2 powers. यहाँ तक कितना हो गया? 2 power 1 plus 2 plus 3 so on up to 60, which is 60 into 61 by 2 into ये भी 2 powers में लिखेंगे तो this is 2 power 2 plus 4 plus 6 so on up to 2n, which will be n into n plus 1 by 2 कट जाएगा, n into n plus 1. So on the whole 2 power कितना आ जाएगा? 30 into 61 plus n into n plus 1 is given to be how much? यहाँ पे 2 power कितना दिया हुआ है? 225 by 8. 225 by 8. Simple quadratic in n, and usually such questions you will be able to identify the value of n by inspection alone. You will be able to find the value by inspection. So easy question, काफी easy question. Power 1 by 60 plus n भी है, तो whole power 1 by 60 plus n, this will be into 60 plus n. Okay, so very simple question, not at all complicated. Happily you will be able to do such questions. This question is a very regularly asked question. Archives, if you see, lot of books contain this question, and
Most of the RK's previous year questions also have this question. तो ये pattern को समझो. P square plus Q square into X square minus 2PQX minus 2QRX plus Q square plus R square. If you closely observe this pattern, this is nothing but P minus QX, sorry, PX minus Q whole square, P square minus 2PQX plus Q square. ये तीनों को एक साथ लेके आओ. P square, 2PQX and Q square. Remaining 3, Q square X square minus 2QRX plus R square. So what is this? QX minus R whole square. Sum of two squares is 0. Sum of two squares is 0. When will sum of squares of two numbers will be 0? This is PX minus Q whole square plus QX minus R whole square is equal to 0. Sum of two squares will be 0 only when each of them is 0. Only when each of them is 0. So X should be Q by P and it should also be R by Q. Only when these two are simultaneously true, this equation will be true. P and Q are given to be positive and this quadratic equation and this quadratic equation have a root in common. अब ये quadratic equation का roots दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? 2 4s are 8. 2 4s are 8. So roots of this are 4 and minus 2. Roots of this are 4 and minus 2. Now can the root be a negative number? Not at all, because P and Q are positive numbers. So root has to be 4. This is 4 equal to Q by P equal to R by Q. Now very simple result, substitute and get the answer. Yes or no? So very easy question, provided you can identify this pattern. Continuity, you cannot expect a simpler question. Limit extending to 0, log of 1 minus x plus x square plus log of 1 plus x square divided by secant x minus cos x. This should be equal to how much? F of 0. Only then the function will be continuous. Now you have to find the value of k. So by continuity, this limit should be equal to k. How to evaluate this limit? Which will be the best method? I'll tell you small simplification here, how you can save some time. Directly ये hospital लगाने से पहले secant x you can see it as 1 by cos x. So this will be 1 minus cos square x by cos x. Cos x is equal to 0 पे कितना हो जाएगा 1. So this will be 1 minus cos square x, which is sin square x. And sin square x is equivalent to what? Sin x is equivalent to x. तो इसको replace करके, इस पूरे को replace करके, you can write it as x square. You can write it as x square. This is the trick. ठीक है? What I am writing? Secant x minus cos x is how much? 1 minus cos square x by cos x. Yes or no? This is how much? Sin square x by cos x. Product में as x tends to 0, cos x is 1. Product में you cannot write when there is a sum plus something or minus something. This is purely there in product or in ratio. So cos x is 1. Sin x by x is 1. So sin square x will be equivalent to x square. Happily, you can replace this by x square. Now, if you want to apply L'Hospital rule, you apply. You want to use power series expansion, you use. Whatever you use in the next line, you will have the answer ready. Okay. So overall, the paper was not difficult. Paper was not lengthy too. But yes, it was testing your learning. Your conceptual learning, it was testing. And it was also testing your patience inside the examination hall. Remember one thing, whenever the paper is difficult, don't lose your confidence. There will still be a lot of easy questions in the examination. Carefully pick them. Carefully pick them. Just draw an analogy to cricket. Whenever the pitch is not good, conducive for batting, what will they do? Score slow. Just hold on to the wicket and score slow. Wait for a bad ball and just drive. ठीक है, अड़े रहेंगे तो
वाइड्स और नो बॉल्स में भी रन आते रहेंगे, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू विल गेट लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस. Don't lose your wicket, don't lose your patient. Sip water, breathe, relax. Chemistry is easy, physics is easy. So automatically you have a lot of time for mathematics. First complete the easier parts. Chemistry, physics आराम से पहले खत्म कर दो, फिर maths में आ जाओ and hold your nerves and pick all the easy questions. Lot of easy questions are there. Pick them, complete them. So here, if you look at the pattern of session 1 as well as in session 2, maths is definitely tougher compared to physics and chemistry. So I would personally suggest you to complete the physics and chemistry parts initially, come to mathematics, happily pick all the easy questions in mathematics and score as much you can. Score as much as you can. That should be the mantra and that will make you successful. Okay, all the very best. See you soon.
हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ये सेशन भी बढ़िया गया होगा आप लोग का। और प्रीवियस जेई मेंस एग्जाम फर्स्ट सेशन के थ्रू आपने कुछ समझ गया होगा, कुछ पैटर्न तो समझ ही गए होंगे और पैटर्न लगभग सेम जैसा चल रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्टी लेवल बहुत मिनिमम है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो जा ही रहे हैं और जो न्यूमेरिकल भी जो पूछ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज मतलब वो ऐसा नहीं कि बहुत सारे मैनिपुलेशंस लग रहे होंगे उसमें और बहुत सारे कैलकुलेशंस लग रहे होंगे। ऑफ कोर्स कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है लेकिन उतने भी नहीं है। सो ऑफ कोर्स फिजिकल केमिस्ट्री देखें या ऑर्गेनिक देखें या इनऑर्गेनिक देखें, तीनों में एक मीडियम लेवल ही लेके चल रहा है। और मालूम है कि जब क्वेश्चंस थोड़े आसान होते हैं तो उस दिन के पेपर उस दिन में कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है, बिकॉज एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करना पड़ता है। टफ है तो कुछ डिस्टिंग्विश हो जाता है, लेकिन अगर बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाए तो उसमें रैंकिंग बनाने में काफी डिफिकल्ट होती है। छोटे छोटे नंबर में, एक नंबर में कई लोग आ जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। सो ऑफ कोर्स हम लोग कहते हैं कि इजी होगा तो मजा आएगा, नहीं इजी होगा तो उसमें कंपटीशन लेवल और बढ़ जाता है, स्कोर लगभग सिमिलर आने लगते हैं सभी के। सो एनीवे, आप सभी अच्छे से एग्जाम दिए होंगे आई एक्सपेक्ट। और नेक्स्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, लाइव सेशन भी स्टार्ट होंगी, प्लीज उसको ज्वाइन करना, उसको अटेंड करना सीरियसली सारे क्लासेस को। एनीवे, आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रोडक्ट आर, अगर एनसीईआरटी देखे तो पहला फोटो बना रखता है इसने, that is a free radical hallucination. So of course ये बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, so it can be said as यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन हैं all are similar हाइड्रोजन, कोई भी अलग नहीं है एक दूसरे से। So through the free radical hallucination all the H, सारे H रिप्लेस हो सकते हैं क्लोरीन से। So of course यहाँ पर number of hydrogen atoms in the product are कितना हो जाएगा अगर सारे रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस नहीं सॉरी मैंने एक चीज थोड़ा सा बताया यहाँ पर, H H H H H H। तो दो कंडीशन देखते होंगे आप लोग कि इसमें Cl2 एक्सेस डाल रहा है, सो देयर कैन बी द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड टूटेगा और Cl करके एड अप होता जाएगा पाई बॉन्ड को, अगर Cl2 से ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर एड ऑन करते हैं सभी जगह Cl 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 फिर रेडिकल में, सो ऑफ कोर्स जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से पहले थे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से पहले थे वो आपको वहां पर दिखना स्टार्ट करेगा, कोई भी हाइड्रोजन लूज नहीं कर रहा है। तो एडिशन हुआ तो सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, और अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ होता तो सारे H की जगह पर Cl आ गया होता। ऑफ कोर्स Cl2 एक्सेस इन सनलाइट दे रहा है, सो टोटल पाई बॉन्ड को तोड़कर Cl ऐड कर देंगे। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 6, सेम जितने बेंजीन में है, कोई लॉस नहीं है। नेक्स्ट, if wavelength of first line of Lyman series of hydrogen atom is lambda and the wavelength difference between second transition of Balmer and third transition of partial series of line spectrum of hydrogen is x lambda, find the value of x। अब इसमें कुछ नहीं, लाइनिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज किया गया जिसके कारण थोड़ा सा आपको वक्त ले सकता था, लेकिन अगर देखोगे तो लाइमन बार्मर पार्शियन फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है ये। सो ट्रांजिशन आपको क्लियर ही होना चाहिए, दैट इज अगर कहीं से भी बाहर से फर्स्ट पे आता है दैट इज लाइमन, कहीं भी सेकंड से आता है दैट इज बार्मर, और कहीं से भी थर्ड पर आता है तो दैट इज पार्शियन सीरीज की बात कर रहा है। तो ये वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दे रहा है, इसका मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज हो गया, मतलब दैट इज लाइमन का फर्स्ट सीरीज दैट इज n equals to 2 to n equals to 1, और उसकी वैल्यू दे दिया lambda। And wavelength difference between second transition of Balmer and third transition of partial series of line spectrum of hydrogen atoms x lambda, find the value of, so 1 over lambda is equals to RH Z square 1 over N1 square minus 1 over
n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप भी जानते होगे, वेव नंबर का फॉर्मूला आप इसको समझ रहे होगे। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज अगर दे रखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज अगर दे रखा है यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स दिस इज RH, हाइड्रोजन एटम है तो 1 कर देना, 1 मतलब इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, 1/1 माइनस 1/2 raised to the power 2 that is 4। सो ये आ गया that is RH 3/4। सो लेमडा की वैल्यू आ गई अपने को, that is लेमडा की वैल्यू 1/λ है ये, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 4/3R। दिस इज द लेमडा फॉर द गिवन फर्स्ट लाइमन सीरीज। तो ये लेमडा की वैल्यू आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट इज, अब दे रखा है सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ बार्मर एंड थर्ड ट्रांजिशन ऑफ पाश्चन। सो सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ बार्मर अगर बात करूं, दिस इज द बार्मर जब 2 पर आना चाहिए, तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। तो n equals to 3 एंड n equals to 2। तो इसके लिए आप लिख दोगे 1/λ फॉर द बार्मर सेकेंड लाइन इज अगेन RH 1/4 माइनस 1/9। तो ये आ जाएगा, जाहिर सी बात है, दिस इज RH 5/36। तो लेमडा फॉर द बार्मर सीरीज फॉर द सेकेंड लाइन इज 36/5R। ये हो जाएगा बार्मर सीरीज का सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है इसमें। सो दिस इज फाइन। थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। सो दिस इज 16 और ये आ जाएगा, सेकेंड लाइन की बात हुई है, तो दिस इज गोइंग टू बी राइट। सो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दिस मस्ट बी 4। तो ये 16 हो गया। सो दिस इज RH, दिस इज 1/4 माइनस 1/16। सो दिस इज बार्मर सीरीज के लिए आ गया, दिस इज 16/3R। सो बार्मर का सेकेंड लाइन, और फिर पाश्चन का थर्ड लाइन। सो दिस इज द टर्मिनेशन पॉइंट 1, 2 and this is 3. So n equal to 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6। तो जाहिर सी बात है यहाँ ट्रांजैक्शन अपने को 6 and 3 के बीच चल रहा है। सो दिस इज पाश्चन सीरीज के लिए मैं लिख देता हूँ 1/पाश्चन के लिए, दिस इज R 1/पाश्चन सीरीज के लिए, दिस इज द टर्मिनेशन पॉइंट। सो दिस इज 9 minus 1/, this is 6, so this is 36। भाई इसको मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करना है, मैं कर दे रहा हूं, लेकिन दिस इज फॉर द पाश्चन सीरीज इट्स गोइंग टू बी दिस इज 4। सो दिस इज 36/4R। ये आ जाएगा पाश्चन सीरीज के लिए 36/4R, राइट। नेक्स्ट इज, अब इसी में सब्स्टिट्यूशन कर दो जो भी है। नाउ द difference between second Barmer and third Paschen is x lambda. Difference between second Barmer and third Paschen is 36. कहाँ गया? This is 16. So this is 16/3R minus this is 36/3R, and this is equals to x times lambda। और lambda की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे आपको। lambda क्या वैल्यू दे रखा है? This is 4/3R। So substitute the value of lambda, you'll get the value of lambda from here। So यहाँ पर this is 16/3R। Just hold on, जगह की कमी। So 16/3R
minus 36 over 3r must be equals to x times lambda. So x times 4 by 3r. So you'll get the value of x. यहाँ से आपको वैल्यू हो गया, x की वैल्यू मिल गई यहाँ से आपको. So the x की वैल्यू is 5. Fine. Barmer is 16 by 3r and Paschen is 36 by 3r. The difference between second transition of Barmer and third transition of Paschen series of Barmer is x lambda. So this is going to be कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है इसमें? That is (36 over r) आ गया और वो 16 by 3r आ गया. नहीं सही है, कोई दिक्कत. थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस, दैट इज इसको तो उल्टा कर दो, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा. डिफरेंस दे रहा है ये, तो दिस इज गोइंग टू बी 36 over 3r and minus 16 over 3r. और कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, राइट? हाँ जी. So this is 36 over 3r and another is 16 over 3r and that is equals to x lambda. So यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर ले सकते हो. आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा है, मतलब डिफरेंसेस ज्यादा है यहाँ पर, और कुछ नहीं. Which of the following is not an aromatic compound? भाई यहाँ पर 2n plus n Huckel's rule 4n plus 2 लगा सकते हो. 2 electrons in conjugation and total 2 4 6 8 10. 4n plus 2 इधर भी 2 4 6. This is यहाँ पर दिख रहा है aromatic जैसा, but you know angle strain है. Strained condition के वजह से this structure is non-planar. Non-planar होने के कारण this is not aromatic. NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है, वहीं से पिक किया है इस एग्जाम्पल को. बड़ा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है, बहुत हाई फाई इसके अंदर नहीं है. सो दिस इज द नॉन एरोमेटिक इज द डी ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज COH2O6Cl2 and COH2O6Cl3. Find the difference between the spin only magnetic moment of the given compound. भाई 6 लिगेंड्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, दोनों में कोबाल्ट है. अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिख रहा है और इधर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिख रहा है. H2O को वीक फील्ड लिगेंड, फील्ड स्ट्रेंथ आप जानते होंगे डिपेंड करता है सिर्फ कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फील्ड इंपैक्ट आ रही होंगी, सिर्फ उस पर नहीं. कौन सी डी सीरीज पर एक्ट कर रहा है उस पर भी, इस पर भी स्प्लिटिंग डिपेंड करता है. लिगेंड से फील्ड थ्योरी मींस लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है उसके फील्ड का इंपैक्ट कितना स्ट्रांग है, वो डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी, प्लस कौन सी डी सीरीज पर वर्क कर रहा है. तो कोबाल्ट दोनों जगह है तो डी सीरीज तो सेम है बट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है. +2 है और एक जगह +3 है. जनरली देखते होंगे बुक्स में लिगेंड से फील्ड स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर दे देता है, बट वो अप्लीकेबल लगभग 3D में चल सकता है जहां पर H2O को एक वीक फील्ड लिगेंड को माना जाता है. लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का चेंज कर गया तो फील्ड का इंपैक्ट भी चेंज करेगा. और कोबाल्ट के केस में +3 के केस में H2O को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं. फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ किसी एक चार्ज पर नहीं डिपेंड करता है, किस पर इंपैक्ट कर रहा है, सेंट्रली कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके फील्ड पर भी दोनों का टक्कर से कितना इंपैक्ट आएगा वो डिपेंड करता है. सो यहाँ पर कोबाल्ट +3 है और कोबाल्ट +2 है. सो कोबाल्ट में दिस इज, और दूसरा आ जाएगा जिसमें T2G and EG लेवल ये जानते होगे. कोबाल्ट atomic number is 27, so 4s2 3d7, so CO +3, इसका मतलब 4s0 3d6 और कोबाल्ट +2 मतलब 4s0 and 3d7.
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एक आ जाएगा इसमें, और +6 है, +6 है CO+3 के लिए। अगर देखें 1 2 3 4 5 6, तो +3 के केस दिस इज फॉर +3 एंड दिस इज फॉर +2। तो जाहिर सी बात है +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगल लगा हुआ है, एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप भी जानते हो, मैग्नेटिक मोमेंट इज √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर √3 3 + 2, so this is √15 बोर मैग्नेटॉन। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोर मैग्नेटॉन। और दूसरे केस में मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो डिफरेंस जो आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट CO+2 के केस में, वही डिफरेंस है उस मैग्नेटिक मोमेंट में भी, वही डिफरेंस सेम विल बी द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं जिसमें भयंकर दिमाग लगाना हो कि ये कैसे क्वेश्चंस आ गए भाई, अब तो बड़ा भयंकर सिचुएशन में मैनिपुलेशन बहुत भयंकर हो गई, ऐसा कोई नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कहेंगे इसको। नाउ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सोचो लेमडा इक्वल्स टू, सब लोग जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू h/p। So velocity of electron is x times the velocity of neutron, ये दे रखा है, this is the velocity of neutron, और plus wavelength of electron is equal to the wavelength of neutron, मतलब h/m of electron, v of electron must be equals to h/mass of proton and velocity of electron, velocity of proton, ये लिख रखा है इसने। तो जाहिर सी बात है आपको दोनों का रेशियो भी दे रखा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू x। तो यहां से निकाल लो, दैट इज मास इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज इक्वल्स टू x। और दोनों का मास दे रखा है, that is 9.1 times 10 to the power, mass of proton, so mass of न्यूट्रॉन बोलते बोलते मैं प्रोटॉन बदल गया जी, ये न्यूट्रॉन and this is mass of neutron and this is mass of electron, और इसमें यहाँ वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास लिख लो यहाँ पर, दैट इज 1.6 इन टाइम्स 10 to the power of -27 kg, और ये आ गया 9.1 टाइम्स 10 to the power of -31 kg। सो you'll get the value of x। यहाँ पर राउंड ऑफ करके आंसर देंगे। नेक्स्ट है, Which of the following can be used as a stabilizer to preserve H2O2? अब ये पूरा लाइनिंग उठा लिया NCERT से। NCERT में ये लिखा हुआ है, H2O reaction is catalyzed. It is therefore stored in wax-lined glass or plastic vessels in dark. Urea can be added as a stabilizer. Urea can be added as a stabilizer. NCERT में क्लियर, ये NCERT का ही स्ट्रैक निकाल कर यहाँ चिपकाया हूँ कि अगर इन जितने भी इस बार देखोगे अंदर से लाइन से डायरेक्ट, पहले हम लोग सोचते थे ये नीट में पूछा जा रहा है, लेकिन इधर देखो लगातार तो एग्जैक्ट लाइन उठाकर पुट अप कर दे रहा है NCERT से रिगार्डिंग द इनऑर्गेनिक पार्ट। ये हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड में दे रखा है, और प्लस इवन इसके आगे जो केमिस्ट्री इन एवरीडे दे दो, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमॉलिक्यूल्स में चले जाओ तो उसमें भी यही हाल कर रखा है। एनीवे, so this is the direct information you can get through the NCERT. So of course the answer is A, that is urea. Next है, product of given reaction is BCl2 and LH4. So ये भी बिल्कुल उठा लिया वहीं से, this is BCl2 plus LiLH4. Of course it's going to give a BH2 plus LiCl plus AlCl3.
So check for the option, that is the BH2, LiCl and AlCl3. Direct reaction है जो NCERT का उठाया है. Next one, column 1 contains molecules and column 2 contains their corresponding shape. The correct match is, मतलब इतना आसान शेप पूछेगा पता नहीं है. PCl5 अब मालूम है, this is the hybridization is sp3d. It's a PCl5, BRF5 ब्रोमीन के पास 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3 4 5, 1 lone pair. So जैसे 1 2 3 4 5 6. So जाहिर सी बात है इसका एक तरफ लोन पेयर दिख रहा अपने को. So this is square pyramidal and O3 we know this is the bent structure like this. So O3 is bent and BRF5 is square pyramidal and PCl5 is trigonal bipyramidal. हाइब्रिडेशन से बिल्कुल बेसिक जब 11th में आते हो तो इन क्वेश्चंस को ही इनको ही हम लोग डिस्कस करते हैं. जस्ट ट्रेडिशनल एग्जांपल कह लो इसको, नॉट द डिफिकल्ट. एंड दीज आर आल्सो प्रोवाइडेड इन द एनसीईआरटी. यही एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो चाहो तो 100 में 100 उठा लो केमिस्ट्री में इस बार. एनीवे, which type of detergent or soap is formed when polyethylene glycol reacts with esteric acid? भाई ये बताओ कि अब डायरेक्ट उठकर आ रहा, अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और द एस्टेरिक एसिड है क्या और किस जानवर का नाम है, तभी जाकर आप नहीं बना पाओगे. इसमें सिर्फ लिखा है which is the soap is formed when this is the soap, cationic detergent, anionic detergent and नॉन आयनिक डिटर्जेंट. तो सीधा सा लिखा हुआ दिस इज द नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं. कैटायनिक एनायनिक तो जब तब बनेगा जब वहां पर दिस वन जब वहां पर कोई आयंस होंगे, चार्जेस होंगे, एग्जिस्ट करेंगे. वन इज एसिड, अनदर इज अल्कोहल. एक का एसिड है, दूसरे का OH ग्रुप है और मिलकर ये एस्टर्स बनाना स्टार्ट करता है. जब भी आप देखते हो पॉलीमराइज करेगा तो. सो दिस इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट. ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है. किसी ने याद कर रखा है तो बढ़िया, नहीं याद कर रखा है तो गया. करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन स्पीसीज. अब प्लस है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस R दे देगा. कोई नहीं है, ये दोनों खींचने वाले हैं. C ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा. C ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा. दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N and this is NO2. तो जाहिर सी बात है ये दे आर -R. दिस इज आल्सो -R -I also. सो अगर स्टेबिलिटी देखें तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करता है एज कंपेयर टू CN. सो ऑफ कोर्स द स्टेबिलिटी ऑर्डर जिस ऑर्डर में लिखा है वही ऑर्डर सही ऑर्डर है. द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर गिवन स्पीसीज 1 2 3 4. फाइन. मतलब क्या बोला जाए, इसमें कोई अगर थोड़ी सी एनसीईआरटी भी रट के गया होता तो वो भयंकर उसने नंबर स्कोर किया होता, नो डाउट. अब ये देखो रिएक्शन, ये पूरा का पूरा कैटलिस्ट के चैप्टर में दे रखा है कि कौन सी कैटलिस्ट किसके में प्रेजेंट होती हैं, किसको यूज किया जा सकता है. पहला वाला देखते होगे तो दिस इज द हेबर्स प्रोसेस आ जाता है. पहला वाला देखोगे तो हेबर्स प्रोसेस आता है. दूसरा अगर पढ़े होगे तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस आ जाता है. तीसरा वाला कॉन्टैक्ट प्रोसेस आ जाता है. सो इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, इसमें प्लैटिनम यूज करते हैं और इसमें V2O5 यूज कर दिया जाता है. दिस आर द मैचिंग पॉइंट फॉर द डिफरेंट रिएक्शन. अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है. अब यहाँ पर तुम गेसवर्क नहीं लगा सकते हो कि कौन सा गेसवर्क सही हो सकता है. अगर आपको इतनी एक्टिविटी सीरीज या इतने एंजाइम्स या कैटलिस्ट के प्रोसेस के बारे में आप नहीं पढ़ते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर याद है एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा है. देखो जोड़ो पूरा के पूरे क्वेश्चंस को तो कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं जिसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई गलती नहीं. याद है तो खटाक से 4 नंबर तुम्हारे पॉकेट में. एनीवे, सो नेक्स्ट इज कंसीडर अ रिएक्शन. A is giving 2B plus C. It is given that T half 100 सेकेंड दे रखा है और यहाँ पर इनिशियल अमाउंट 0.5 दे रखा है. और दूसरे केस में दिस इज T हाफ 50 सेकेंड दे रखा है और इनिशियल अमाउंट 1 दे रखा है. तो T हाफ चेंज कर रहा है इनिशियल अमाउंट से. तो एक तो पता चल गया कि ये कभी भी
फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकता है, तो उसके इक्वेशंस को ही छोड़ दो। या जनरलाइज इक्वेशन आप अगर करते हो t half is equals to 1 over k, this is 2 raised to the power of n minus 1 over a to the power of a naught to the power of n minus 1। तो जो भी वेरिएशन है t half is inversely proportional to a naught n minus 1। सो आप अगर t1 और t2 फर्स्ट के लिए हाफ लाइफ एंड सेकेंड के लिए हाफ लाइफ अगर देखो, these are the half lives, तो इनवर्सली जा रहा है। तो दिस इज a2 ओवर a1 to the power of n minus 1। तो t1 कितना दे रखा था, t1 100 दे रखा है, और t1 100 और t2 50 दे रखा है सेकेंड के लिए, एंड दिस इज a2 is 1, तो 1 over 0.5 to the power n minus 1 is 100 over 50। तो भाई अगर इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, तो 0.1 over 0.5 is 2, और ये 2 क्या आ रहा है, तो 2 को अगर n अगर 2 रख दोगे तो टोटल पावर 1 हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स इज द सेकेंड ऑर्डर सीरीज। Second, next is 0.5 molar 800 ml of HNO3 is heated. The volume of the solution reduces to half of the initial amount and the mass of HNO3 is remaining 11.5 gram. Find the molarity of the final solution. अब बताओ, इससे आसान न्यूमेरिकल, बैंकर न्यूमेरिकल इससे आसान, बैंकर आसान न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है। हाँ, इसने मास ऑफ नाइट्रिक एसिड जो बचा है वो दे दिया है, और कह रहा है कि वॉल्यूम आधा हो चुका है जी। सो आधा हो चुका है, इसका मतलब कितने लीटर्स हो चुके हैं, दैट इज 400 ओवर 1000, दैट इज 0.4 लीटर से। और मोल्स कितने आ गए हैं जी, मोल्स इज 11.5 ओवर 63 मोल्स। ये मोलर मास ऑफ HNO3 63 हो गया। तो मास पर लीटर, मोल्स पर लीटर, दैट इज 11.5 ओवर 63 डिवाइडेड बाय 0.4, यही आ जाएगा नया मोलारिटी। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वॉल्यूम को रख देनी, आधा कर देनी थी, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स 11.5 by 63 कर दो, और वॉल्यूम 400 ले लो, एंड देन द लीटर्स में जितने भी मोल्स पर लीटर आप फाइंड कर लीजिए इस केस में। फाइन, नेक्स्ट इज ऑन टाइट्रेशन KMnO4 with sodium oxalate, the change in oxidation state of manganese is। आपको ये मालूम है, फिर से डायरेक्ट रिएक्शन डी ब्लॉक में -2 प्लस K पॉजिटिव KMnO4, दिस इज KMnO4, तो यहाँ पर +7 है, और ये प्लस एसिडिक मीडियम, और दिस इज गोइंग टू चेंज द CO2, दैट इज +4, और ये चला जाता है Mn +2 में, +7 से +2 में चला जाएगा। बहुत बार आपने टाइट्रेशन में जब भी आप टाइट्रेशन के क्वेश्चंस किए होंगे, तो ये ट्रेडिशनल एग्जांपल है टाइट्रेशन का। ये एग्जांपल्स भरे रहते हैं, भले उसमें न्यूमेरिकल करते होगे, ये नहीं सोचा होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट इन फैक्टर फाइंड करने में कई बार इन क्वेश्चंस को किए होंगे, और आपके सामने से ये स्टेटमेंट गुजरा होगा। तो ये सिर्फ दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +5 में जा रहा है, और इसमें आप +7 से +2 में जा रहा है। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है, दैट इज 7 से 2, दैट इज 5। नेक्स्ट इज a mixture of H2 and O2 contains 40% by mass H2 by mass. If total pressure is 22.2 atm, then calculate the partial pressure of O2। तो मैं मालूम है partial pressure of gas is mole fraction into its total pressure। तो इसमें देख लो, हाइड्रोजन का परसेंटेज, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन रख लेते हैं 40 ग्राम्स, तो मोल रख लेते हैं हाइड्रोजन का, दैट इज 40 ओवर 2 मोल्स, दैट इज 20 मोल्स, और मास ऑफ ऑक्सीजन इज 60 ग्राम्स। तो जाहिर सी बात है, मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया, दैट इज 60 ओवर 32 मोल्स, ये दोनों का मोल्स आ गया। और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर दे रखा है 2.2। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दे रखा है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 is equals to 60/32 divided by 60/32 plus 20, and the partial pressure of O2 is going to be 60/32 by 60/32 plus 20 into 2.2 So this is going to be define the partial pressure of O2. तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द फाइनल द ओवरऑल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बर्स्ट रिडक्शन. बर्स्ट रिडक्शन इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी सोडियम का काम क्या है कि इट्स गोइंग टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है मतलब ये होमोलिटिकली ब्रेक कर दे रहे हैं इस तरह से, लाइक दिस. अगर इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं तो ये कैसा दिखेगा, अभी ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है. डॉट डॉट मिलकर इधर पाई बॉन्ड बना देगा, इधर डॉट और इधर एक डबल बॉन्ड. सोडियम लिक्विड अमोनिया, एक एग्जांपल बता रहा हूं सिर्फ. सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दिया तो डॉट को नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव एट द प्रोटोनिक सॉल्वेंट इथेनॉल है वहां पर, उसको H मिल जाएगा. सो यहाँ पर H आ जाएगा और इट विल बर्स्ट रिडक्शन, हाइड्रोजन को ऐड ऑन कर देगा. लेकिन यही याद रखना कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से. सो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप नेगेटिव चार्ज अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ नेगेटिव नहीं बना सकते हो. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 अगर है यहाँ पर, तो यहाँ नेगेटिव बना लो, कोई दिक्कत नहीं. मतलब और भी पाई बॉन्ड्स हैं, उसको लेके चल रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कहाँ नेगेटिव नहीं बना सकते हो, कहाँ नेगेटिव बना सकते हो. सो आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से क्लीव करते हो ताकि NO2 के पास नेगेटिव आ जाए, और OCH3 के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो वहां पर नेगेटिव नहीं बने, बगल में नेगेटिव बने. सो NO2 बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I -M दोनों इफेक्ट देता है ये. सो अगर NO2, अगर मैं कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरह से शो करूं लाइक दिस, यहाँ पर अगर NO2 है और इधर पर अगर OCH3 है, लेट सपोज इस तरह से बॉन्ड बना दिया मैंने, इसको डॉट डॉट अगर ब्रेक कर दिया, इसको भी डॉट डॉट ब्रेक कर दिया, तो ये डॉट रह जाएगा, ये डॉट डॉट पाई बॉन्ड बना देगा, ये डॉट इलेक्ट्रॉन सोडियम से आकर नेगेटिव बन जाएगा. सो ये आंसर मैच कर रहा है, दैट इज विद द सी ऑप्शन. सो इसमें सी ऑप्शन की तरफ पाई बॉन्ड रह जाएगा, और सोडियम विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कार्बन पर नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव बनाकर हाइड्रोजन उस पर चिपकता चला जाएगा. बर्स्ट रिडक्शन बड़ा कॉमन एग्जांपल है वो. Which of the following is non-reducing sugar? Reducing sugar और non-reducing sugar किस बेसिस पे कहा जाता है? Either वो टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है. सो अगर कोई भी अल्कोहल, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है अगर, सो इट वेदर इट कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड और नॉट बाय द टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन, उस पर डिपेंड करता है. तो जब भी मोनोमर्स जब भी होते हैं फ्रक्टोज और कीटोज के, जब भी अल्डोज और कीटोज के जब भी मोनोमर्स होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, दे कैन इजीली गेट ऑक्सीडाइज्ड. सो जब भी कोई हेमी एसिटल फॉर्म बनाते हो आप, लाइक C डबल बॉन्ड H है, and this is the OH of the terminal of the OH, can it make the 6-membered ring or 5-membered ring by making हेमीएसिटल फॉर्म. सो इसमें सिर्फ इतना देखा जाता है, आप पढ़े भी होंगे इन चीजों को, सिर्फ इतना देखा जाता है कि जब भी कोई साइक्लिक स्टेट बन रहा है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, तो दिस इज द एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक कार्बन हेमीएसिटल फॉर्म में अगर होगा तो दैट कैन गेट इजिली अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, ब्रेक करके वो ऑक्सीडाइज हो सकता है. सो इस स्ट्रक्चर का एनोमेरिक कार्बन इज दिस, और ये हेमीएसिटल फॉर्म नहीं है. हेमीएसिटल फॉर्म का मतलब एक OH होना जरूरी है, दैट इज अ हेमीएसिटल फॉर्म. दो अल्कोहल नहीं जोड़ रहे हैं, एक अल्कोहल जोड़ रहे हैं, दैट इज अ हेमीएसिटल फॉर्म. सो एक अल्कोहल जोड़ रहे हो तो ये फिर से ओपन चेन हो सकता है एंड एल्डिहाइड फॉर्म में आ सकता है. एल्डिहाइड फॉर्म में आया तो ऑक्सीडाइज हो सकता है. लेकिन अगर यहाँ पर OH नहीं होकर OR आ गया, देन इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, ये वापस अपने एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म में वापस नहीं आ सकता है. सो जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी अगर
इसकी एनोमेरिक कार्बन देखें, दोनों में दिख रहा है कि इसके दोनों एनोमेरिक कार्बन जो है वो सुक्रोज का एसिटल फॉर्म में है, नॉट इन द हेमी एसिटल फॉर्म में दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है द सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन इसमें भी ये मेमोरी बेस्ड ही हो गया। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो भी एग्जाम्पल दे रखा है, ग्लूकोज एग्जाम्पल दे रखा है, उसको आपको ध्यान रखना। और मोनोमर हमेशा रिड्यूसिंग शुगर ही होते हैं, वो कभी भी नॉन रिड्यूसिंग नहीं होते, उसमें हमेशा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एल्डिहाइड होते हैं। सो इट कैन ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन। सो अगेन द स्ट्रक्चर नेक्स्ट है, chlorophyll is extracted from a leaf. The amount of magnesium was 48 ppm. The number of millimoles of magnesium is in 2 liter of solution is ppm आ गया, that is कितना दे रखा है, ये ppm दे रखा है 48 ppm. So this is 2 liters of solution दे रखा है. Let the mass of magnesium be x and over 2 times 10 raised to the power of 3 तो इंटू 10 raised to the power of 6. ये ppm अगर निकालना होता तो ये मैं निकाल लेता, 2 लीटर्स में दे रखा, उसके ml में कन्वर्ट कर लिया, फिर 10 raised to the power 6 से मल्टीप्लाई कर लिया. सो बड़ा इजी इक्वेशन है कि 10 raised to the power 6 में कितने अमाउंट मिल रहा है, दैट इज 48 वेट ppm. सो मास कितना आ गया, मास इज गोइंग टू बी 48 into 2 into 10 raised to the power 3 into 10 raised to the power of -6 नीचे आ जाएगा. तो मोल्स कितने हो जाएंगे, that is 48 times 2 times 10 raised to the power of 3 times 10 raised to the power of -6 over 24. So this is the number of moles. तुम्हें मिलीमोल्स चाहिए तो याद रखना मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो आप 10 raised to the power of -3 को अलग रख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. इसको कैलकुलेट करोगे 48 over 24 तो ये 2 4, तो ये अब दिख रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 into 10 raised to the power of -3. So number of millimoles is, millimoles में आंसर पूछा है तो आप 10 - 3 को हटा लो तो the answer is 4. Next is in summer season the methane reacts with chlorine atom forming chlorine sink. Again information अगर ये क्लियर है तो बढ़िया है, क्योंकि आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आप H को हटाकर रेडिकल के मैकेनिज्म के थ्रू जाते हो. सो इसमें एक वर्ड डाल दिया है, इन समर सीजन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एटम फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक प्रिवेंटिंग ओजोन डिप्लीशन. द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन आर, सो ऑफ कोर्स इट्स अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रिएक्शन. सो दिस इज CH3 डॉट प्लस HCl. सो यहाँ पर CH4 विल रिएक्ट विद द Cl डैश एंड Cl डॉट, और ये बन जाएगा CH3 डॉट प्लस HCl. सो इस रिएक्शन की बात कर रहा है ये, यही प्रोडक्ट बनेगा इसमें. नेक्स्ट होगा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में देखो कितना आसान है. अगर कोई भी इक्विलिब्रियम है, A in इक्विलिब्रियम में द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, साइन थोड़ा सा एरो का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर दे रखा है, मींस फॉर एग्जांपल बड़ा जनरलाइज है ये, मतलब ये ऐसे टॉपिक से दे रखा है जो आप चैप्टर स्टार्ट होता है तो ट्रेडिशनली इन इंफॉर्मेशन को देना ही पड़ता है. सो अगर B बना रहा है और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसको पलट दिया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा दैट इज 1 over K1 होगा. और इसको अगर मैं 2A प्लस 2B 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, ये मालूम होगा. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ यूज कर लिया है, एक बार हाफ कर दिया है और एक बार पलट दिया है. सो इस रिएक्शन को पलट दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो न्यू इक्विलिब्रियम K2 क्या आ जाएगा, K2 इज 1 over K1 टू द पावर हाफ, यही आ जाएगा इसका आंसर. सो दिस इज 1 over 2 times 10 raised to the power of 15 to the power half is K2. मतलब ये आप सोच के देखो, ये पहला इंफॉर्मेशन बताई जाती है जब भी कोई इक्विलिब्रियम यूज किया जाता है, तो सिर्फ इसमें आप ध्यान रखना दोनों को, एक तो वापस पलटा है और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. नॉट वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इन सेशन एंड होता है. आप देख रहे होगे कि कितने इजी क्वेश्चन चल रहे हैं. हाँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इसको आपको जिसको लीस्ट प्रायोरिटी पहले लिया करते थे हम लोग, सभी लोग बच्चों को बोलते रहते थे कि रट लो रट लो रट लो,
लेकिन उससे ज्यादा ध्यान आपकी जाते थे किधर, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लेकिन ये वापस धक्का मारा इसने, बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जेई एडवांस के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, मैं यही उनको सजेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं, प्लीज गो थ्रू इट, लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए, स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए, जो भी जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, और लास्ट में जो चैप्टर्स हैं दैट इज प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड, उसको भी जरूर रीड करो, एडवांस में समय है। और प्लस इन चीजों को प्रिकॉशनरी मेंटेन करने के लिए, ताकि आपको इन चीज बारे में इंफॉर्मेशन हम दे सके अच्छे से, वी आर कंडक्टिंग एडवांस एग्जाम, एडवांस रिव्यू सेशन, उसको जरूर अटेंड करना, उसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि ट्रेंड्स लगभग कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा आपको। एडवांस में थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम पूछ लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी चलने वाले हैं। सो प्लीज गो थ्रू इट। ओके स्टूडेंट्स, bye bye, take care, and I hope you are enjoying the live session and getting something profitable. Now please go through the NCERT again and again. Thank you. Bye bye, take care. हेलो एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज गुड। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा गया होगा। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो मेरी विशेष आपके साथ है, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए, 2 सेशन या 2 दिन हो चुके हैं। आज के सेशन में जो फर्स्ट सेशन ऑफ टुडे है उसका हम लोग कुछ पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आपके कमेंट्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी। चलिए, आज वैसे जैसे कि पिछली बार भी हमने डिस्कस किए थे पेपर्स कुछ, आज भी स्पीड तेज रहेगी, क्योंकि मुझे पता है जिन लोग अभी क्लास मतलब ये जो अटेंड कर रहे हैं सेशन, उनको आज के बाद पढ़ना भी है, उनका एग्जाम भी है, इसलिए बहुत ही तेजी से इस सोल्यूशन को डिस्कस करूंगा, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। जो क्वेश्चंस आए वो आपको भी पता है, मामला अंडर कंट्रोल है। लेट अस स्टार्ट। चक दे फट्टे। देखो, लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया, वैल्यू दिया हुआ है ai कैप माइनस 4j कैप। आपको आइडिया है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, और क्रॉस प्रोडक्ट से पता चल जाता है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। यहां पे चुपचाप डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो I से I मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, 3 से -4 मल्टीप्लाई किया -12 हो गया, इक्वल टू 0 कर दिया, a का वैल्यू 6 आ गया। थैंक यू वेरी मच। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर में मामला काफी अंडर कंट्रोल है, इसलिए स्कोरिंग बनाना ही है। चलो, आई मिस यू टू, बहुत बढ़िया दीपक साहू, वेरी गुड। बट अगर देखो ये वैल्यू में मुझे कंफ्यूजन है, यहाँ 2i कैप प्लस 2j कैप होता तो आई थिंक आंसर 4 आ जाता, तो वो क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है 1-2 पेपर में कुछ आगे पीछे मिस्टेक हो। जैसे यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप होता तो आंसर वुड हैव बीन 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मामला बहुत इजी, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा सॉल्विंग है। ये अकेला सवाल है जिसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ रहा है। लिखा हुआ है कि assume all surfaces are frictionless, find value of force required such that 20 kg block move with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वर्टिकल एक्सेलरेशन बोल देता हूं मैं इसको, अदरवाइज में सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टली सिस्टम को चला रहे हैं तो ये सिस्टम हॉरिजॉन्टली तो चलेगा ही, साथ साथ ये नीचे गिर रहा है, इसके नीचे गिरने का एक्सेलरेशन
हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। तो अगर मैं रामलाल को, आपको याद होगा अपना प्यारा रामलाल को अगर यहां पे खड़ा कर दूं तो फिर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे दिखेगा। ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चलेगा और ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे चलेगा। और ये नीचे वाला ब्लॉक जिसपे रामलाल खड़ा है, मान लो किसी A1 एक्सेलरेशन आगे चले तो फिर यहां पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा हमको। तो हमारा चॉइस होता है, हम रामलाल को यहां पे रखेंगे तो ये नीचे वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, तो फिर ये वाला ब्लॉक वर्टिकली 2 से गिर रहा है और ये हॉरिजॉन्टली 2 से आगे चल रहा है। उसका हमको सिचुएशन इमेजिन करना है। अब हम लोग एफबीडी बनाएंगे और इक्वेशन बनता जाएगा। देखो ऊपर वाले 10 किलो का एफबीडी बना रहा हूं, आगे लग रहा है टेंशन, पीछे लग रहा है सूडो फोर्स 10 इंटू A1 और ये चल रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे। तो हमने इक्वेशन बनाया T माइनस 10 A1 इज इक्वल टू, इसमें मुझे थोड़ा ये चेक कर लेना पड़ेगा कि ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और ये वाला एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। 20 kg ब्लॉक्स मूव्स अप होगा तभी मामला बनेगा इसका। तो ये पीछे की तरफ एक्सेलरेशन 2 से चल रहा है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। तो मैं इक्वेशन थोड़ा बदलता हूं, ये वाले एक्सेलरेशन का वैल्यू लेफ्ट में कर देता हूं, ये ऊपर जा रहा है, ये पीछे जा रहा है और ये डिब्बा रिलेटिवली आगे जा रहा है। तो इक्वेशन बना 10 A1 माइनस टी इक्वल टू 10 इंटू ए का वैल्यू 2 लिख दिया। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 फॉर 10 kg ब्लॉक। अब 20 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाते। 20 kg में 20 G नीचे है, टेंशन T ऊपर है और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन 2 से। तो इक्वेशन बनाया T माइनस 200 इक्वल टू 20 इंटू 2। T का वैल्यू आ गया 240 न्यूटन। T को यहां रख दिया तो 10 A1 माइनस 240 इक्वल टू 20। तो A1 का वैल्यू आया 260 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 26। क्वेश्चन में पूछा है फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए या तो मैं तीनों का मिला के एफबीडी बना सकता हूं या फिर केवल 10 किलो का 20 किलो के साथ एफबीडी बना लेता हूं, क्योंकि 20 किलो वाले का एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ वही A1 है जो इसका A1 है। आगे दोनों A1 से चल रहे, ये वाला पीछे भी चल रहा है आगे भी चल रहा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये वाला ब्लॉक 100 किलोग्राम और 20 किलोग्राम दोनों चल रहे हैं एक्सेलरेशन A1 से आगे। इस पे लग रहा है फोर्स F, इनका आपस का फोर्स हो गया इंटरनल और यहां पे एक टेंशन पीछे की तरफ लग रहा है T। इक्वेशन बना F माइनस टी इज इक्वल टू 100 प्लस 20 ये हो गया 120 का मास और एक्सेलरेशन हमने निकाला 26। अगर इससे फोर्स का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 26 इंटू 120 प्लस टी का वैल्यू हमने निकाला 240। ये पहला ही सवाल केवल है जिसमें कैलकुलेशन आया 3360 न्यूटन का हमारा आंसर इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा क्रॉस चेक करने की बात होगी क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर में थोड़ा इधर उधर नंबर आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में भी आगे पीछे गड़बड़ हो सकती है। चलिए एसएचएम में Vx का ग्राफ कैसा होता है, कई तरीके से बोल सकते हैं। एसएचएम में अगर x का फंक्शन मैंने a sin ओमेगा t लिखा तो वेलोसिटी का फंक्शन a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा जो रिलेशन आया ये तो एलिप्स का इक्वेशन होता है, आंसर एलिप्स का ग्राफ हो गया। coil of 200 tons and another coil of 400 tons have same length of wire बोल देता हूं। अगर मैं एक वायर जिसका लेंथ L हो उसको घुमा घुमा के n टर्न्स बना दूं R1 रेडियस के और नंबर ऑफ टर्न्स N1 बोल दूं तो N1 इंटू 2 पाई R1 इज इक्वल टू लेंथ L हो जाएगा। अगर इसी वायर का नंबर ऑफ टर्न्स N2 कर दूं और उसका रेडियस R2 कर दूं तो एक टर्न का लेंथ होता है 2 पाई R और N2 टर्न्स हैं तो N2 इंटू 2 पाई R2 इज इक्वल टू सेम लेंथ हो जाएगा। फिर से देख लो, एक वायर लेंथ L का था, मैंने उसको घुमा के एक टर्न मारा तो 2 पाई R का लेंथ हो गया।
फिर एक और टर्न मारा, फिर 2 पाई आर हो गया। यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स मारेंगे उतनी बार n इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। टोटल लेंथ वायर का l है, तो n1 इंटू 2 पाई r1 का वैल्यू l है। यहां पे n2 इंटू 2 पाई r2, यानी नंबर ऑफ टर्न्स बदल दिए तो रेडियस भी बदल गया लूप का, और इसका भी टोटल लेंथ l है। यानी n1 r1 इज इक्वल टू n2 r2 ऐसे चल रहा है। एक रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा रिलेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे बनता है तो वो म्यू नॉट n1 i अपॉन 2 r1 ऐसे बनेगा, और B2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है तो म्यू नॉट n2 i अपॉन 2 r2 बनेगा। अब इसमें n1 इज प्रोपोर्शनल टू r पहले ही चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में म्यू नॉट ni बाई 2r वाले फॉर्मूले में r की जगह अगर 1/n लिख दूं, r इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो r को अगर 1/n लिख दूं तो b प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो b1 बाई b2 करेंगे बच्चों तो n1 बाई n2 का स्क्वायर हो जाएगा। n1 बाई n2 में नंबर ऑफ टर्न्स एक बार 200 है और एक बार 400 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने डबल कर दिए तो b1 बाई b2 का आंसर स्क्वायर करते ही 1/4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि जिस वायर से हमने ये नंबर ऑफ टर्न्स यानी कॉइल बनाया है उसका लेंथ बराबर है दोनों वायर का 20 सेंटीमीटर। राइट दीपक, वेरी गुड। देखिए, फाइंड करंट थ्रू सेल, इससे लल्लू सवाल नहीं हो सकता। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, इसको हटाया, 4 और 4 मिलके 8 हो गया, 4 और 4 मिलके सीरीज में 8 हो गया, 8 और 8 पैरेलल मिलके 4 हो गया, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम आ गया। 20 की बैटरी है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आंसर आया 5 एम्पियर। यहां से 5 एम्पियर करंट निकाल दो। थोड़ा स्पीड फास्ट है क्योंकि जो बच्चे इसको समझ रहे हैं, ये सब सीरीज पैरेलल की कहानी बहुत सिंपल होता है भैया, 9th 10th में भी पढ़ा, बाद में भी पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, तो इसको मैनेज करो। एक और पैरेलल का बहुत ही लल्लू सवाल आया। खैर, ये एसी सर्किट का सवाल है, इसमें लिखा है एलआर सर्किट दिया है, यानी कैपेसिटेंस नहीं दिया, तो एक्ससी का वैल्यू 0 है और एक्सएल और आर का वैल्यू सेम है। हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर का फॉर्मूला R बाई जेड, ऐसे मतलब फॉर्मूला बेस करना चाहो तो R बाई जेड होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं तो फेजर डायग्राम से भी हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन R बाई जेड फॉर्मूला होता है। R तो R होता है, Z का वैल्यू होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में XC का केस 1 में पावर फैक्टर निकाल रहे हैं P1, तो आंसर आएगा R अपॉन अंडर रूट ऑफ XC 0 है तो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऊपर से XL और R भी बराबर है तो R अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये √2R हो जाएगा, √2R, R से R कट गया 1/√2। केस 2 करेंगे तो पावर P2 आएगा R अपॉन अंडर रूट ऑफ, लिखा है XL और XC बराबर है तो XL माइनस XC करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस R स्क्वायर। अब ये आ गया R बाई R, आंसर हो गया 1, तो पावर फैक्टर एक का वैल्यू 1 आया, दूसरे का वैल्यू 1/√2 आया, तो रेशियो लिया 1/√2। मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगा रहे तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि XL और R बराबर है, ये R है ये XL है, तो ये जो इंपीडेंस चलेगा ये इंपीडेंस पहले वाला है, कितने एंगल पे चलेगा, 5 एंगल पे, इसका वैल्यू 45 है, तो पावर फैक्टर का आंसर cos phi भी बोलते हैं, तो cos phi का वैल्यू आ गया 1/√2, पहला केस। दूसरे में XL और XC आपस में कट गए तो इंपीडेंस R रह गया, अब इंपीडेंस R रह गया तो फेज 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो पावर फैक्टर cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू होता 1, तो पहले वाले में 1/√2, दूसरे वाले में 1, रेशियो लेंगे तो 1/√2 आ गया। पावर फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी ले सकते हैं, फेजर डायग्राम से भी कर सकते हैं। सवाल है, मंकी क्लाइम्स अ रोप विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एंड इट क्लाइम्स डाउन विद एक्सेलरेशन 5, यानी मंकी अगर ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन 4 है, अगर नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन 5 है। क्वेश्चन पूछा वेट ऑफ मंकी इज 50 किलोग्राम, मैक्सिमम टेंशन इज 350 न्यूटन, यही यहां पे ही सवाल सॉल्व हो जाना था। देखो, अगर एक रस्सी पे मंकी को केवल चढ़ने के लिए, मतलब केवल रोक दो, हवा में टांग दो, कह दो मंकी केवल टंगा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है,
तो भी इसके टेंशन को mg से बैलेंस होना पड़ेगा। अगर ऊपर जाना है तो टेंशन का वैल्यू mg से बड़ा होना चाहिए, और नीचे आना है तो टेंशन का वैल्यू mg से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बाकी ऑप्शन भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक बात तो ये हो गई कि अगर ये मंकी ऊपर जाना चाहता है तो टेंशन mg से बड़ा होगा, और mg का वैल्यू खुद 500 न्यूटन है। जरा ध्यान दो, यहां पे 50 किलो का मंकी है, g का वैल्यू 10 है, तो अगर मंकी नहीं चढ़े तो भी उसको कम से कम कितना टेंशन चाहिए, 500 न्यूटन का। और यहां पे इस थ्रेड में मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन 350 है, यानी कि अगर मंकी चुपचाप टंगा भी रहे तो भी रस्सी टूट जाएगी। अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तब तो रस्सी टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि टेंशन का वैल्यू ग्रेटर देन 500 न्यूटन चाहिए टू मूव अप, और टेंशन 350 पे रस्सी टूटती है तो ऊपर जाते ही रस्सी टूटेगी। ठीक है, लेकिन नीचे आने वाला केस सॉल्व कर लेते कि नीचे जाने पर ऐसा तो नहीं ये भी ऑप्शन सही ये भी ऑप्शन सही बोनस हो जाए। तो हमने नीचे आने के लिए देखा एक्सेलरेशन 5 है, एफबीडी में टेंशन ऊपर mg नीचे, नीचे आने के लिए सॉल्व किया mg माइनस टी इक्वल टू ma, mg की जगह लिख दिया 500 न्यूटन माइनस टी इक्वल टू मास है 50, एक्सेलरेशन है 5, तो t का वैल्यू आया 250। क्वेश्चन में नीचे अगर जाना है तो एक्सेलरेशन 250 चाहिए, अगर ऊपर जाना है तो एक्सेलरेशन 700 न्यूटन चाहिए, अगर डाउन जाना है तो, लेकिन ये आंसर फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि रस्सी तो 350 पे टूट जाएगी, तो नीचे जाना पॉसिबल है, लेकिन नीचे जाने के लिए टेंशन 250 ही चाहिए। वी नीड ओनली 250 न्यूटन टेंशन टू मूव डाउन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टेंशन 700 चाहिए था ऊपर जाने के लिए, बट रस्सी ब्रेक्स एट 350, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन सही हो गया, रस्सी विल ब्रेक व्हेन क्लाइम्स डाउन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि क्लाइम्स डाउन तो पॉसिबल है, 250 न्यूटन का ही फोर्स चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेव इक्वेशन इज गिवन, अरे ये हो गया एम्पलीट्यूड, मत पूछो कैसे, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे ए जो आगे लिखा रहता वही, अरे छोड़ो ना, हो गया। अब ये सारे नंबर अलग है तो यही वाला ऑप्शन हो गया। मे बी यूनिट चेंज करवा रहे होते तो अलग बात होती। YDSE एक्सपेरिमेंट में सारा सेटअप को पानी में डुबो दिया या किसी लिक्विड में डुबो दिया, तो बीटा डैश का वैल्यू बीटा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको याद कराया गया है, तो आप म्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो बीटा का वैल्यू ये 4/3 से डिवाइड करा तो 3 ऊपर चला गया, 4 से कैंसिल हुआ, 9 आ गया सेंटीमीटर में आंसर। ये हमने किया हुआ है सब, मतलब ये किया हुआ है कि ये लैम्डा का वैल्यू लैम्डा डैश अगर मीडियम बदलते तो लैम्डा बाय म्यू हो जाता है, और बीटा का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है, तो बीटा बाय म्यू हो जाएगा। ठीक है, विथ स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ 2 ब्लॉक्स आर गिवन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोनों ब्लॉक को वेलोसिटी बराबर दे दिया 1 और 1, इसलिए ये क्वेश्चन इजी हो गया। अगर दोनों ब्लॉक को अलग अलग वेलोसिटी देते तो फिर हम इसको सॉल्व करते अपने स्पेशल, यानी कि एक वो वाले फॉर्मूले से जिसको हम बोलते हैं मैजिकल फॉर्मूला। तब ये दोनों के बीच में मैक्सिमम इलोंगेशन तब होता जब इनका रिलेटिव वेलोसिटी या लाइन ज्वाइनिंग पे अप्रोच वेलोसिटी 0 हो जाता या रिसीडिंग वेलोसिटी 0 हो जाता। तो हम बोलते कि अगर ये अलग अलग वेलोसिटी होते तो सवाल फिर भी खतरनाक बनता, लेकिन या थोड़ा ऐसे मजेदार बनता। लेकिन अभी हमने देखा कि ये 1 से चल रहा है, ये भी 1 से चल रहा है, मास दोनों के बराबर है, तो एक इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, VCM 0, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस VCM 0 हो गया। अगर VCM 0 हो गया तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इसका वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा और इसका वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, उस समय फिर से VCM 0 होगा और स्प्रिंग का इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। तो इस सवाल में हमने बोला कि हाफ kx स्क्वायर जो स्प्रिंग की एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दोनों की, वो सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें चली जाएगी। मतलब खेल में ऐसा होता कि अगर दोनों के वेलोसिटी अलग है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन करके दोनों का वो कॉमन वेलोसिटी निकालते जो मैक्सिमम इलोंगेशन के समय आया। उस वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम में होती वो इनिशियल में से वो काइनेटिक एनर्जी माइनस करते, तो जो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती। या इसको कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो आपको ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरह दिखता। तो हमारा फॉर्मूला यही है कि हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू हाफ
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए, अपने आप आंसर बनने लगेगा, अपने आप आएगा। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। उसकी तरह हमेशा क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद चिपक जाती है और सेम हो जाती है। यहां पर भी मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन के समय पे भी दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, वो अभी स्प्रिंग में चला जाएगा, तो आप इससे भी x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू एक बार चेक करना तो ये 0.5 आ जाएगा, वो कैलकुलेट आप खुद कर लेना, चाहो तो मैं करूं। ये कैंसिल किया, हाफ k का वैल्यू दिया है 200, यहां पे लिख दिया 200, x का वैल्यू पता नहीं है, x स्क्वायर, हाफ m का वैल्यू दिया हुआ है, मास का यहां दिया हुआ 25, वेलोसिटी का वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दिया। तो आप ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू 25/100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 है, तो x का वैल्यू 1/2 यानी 0.5। In the circuit shown, if the switch S is closed, find the total charge flown through the switch. अरे बहुत ही लल्लू सवाल है। 1 2 3 4 टोटल कैपेसिटेंस हो गया 10, चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, C का वैल्यू 10, V का 20, आंसर आ गया 200। यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रोकूलम, चारों ऑप्शन माइक्रोकूलम ही है, 200 वाला ऑप्शन ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोजेक्टाइल शोन U1 by U2 बताना है। इफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज सेम, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल टू U sin थीटा हो जाएगा। तो U1 sin थीटा 1 अपॉन U2 sin थीटा 2 इज T1 by T2, लेकिन बोल रहा है T1 T2 सेम है, यानी रेशियो 1 है, तो हम बोलेंगे U1 sin थीटा 1 इक्वल टू U2 sin थीटा 2। इसका मतलब है U1 अपॉन U2 इज sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1। अब sin थीटा 2 में 30 डिग्री लिख दिया तो 1/2 आ गया, यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिया तो 1/√2 आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो 1/√2 आ गया, आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, कुछ कमेंट भी कर सकते हो भाई, बहुत दिनों बाद मिले हैं। चलिए, द डिक्रीज इन वेट इन द रॉकेट, फॉर्मूला G का होता है Gm/r², क्योंकि ये जो 32 किलोमीटर है, इट इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू 64। छोटे मोटे डिस्टेंस, यानी अगर रेडियस के कंपैरिजन में डिस्टेंस चले, कोई बोलता है 2r हाइट पे चला जाए, 5r हाइट पे चला जाए, तो स्मॉल डिस्टेंस नहीं है, तब तो हम एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे। Gm/r में पहला वाला वैल्यू लिखेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे, फिर उनका डिफरेंस देखेंगे। लेकिन अभी G का फॉर्मूला ये है, तो ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा G/G इंटू 100 इक्वल टू, ये r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस 2 डेल्टा r/r इंटू 100। अब डेल्टा G/G इंटू 100 करा तो परसेंटेज चेंज इन G आ गया, इक्वल टू -2, ये पावर -2 है इसलिए -2 लिखा, डेल्टा r/r की जगह लिखा 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 100, तो 64 और 2 मिला के 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1%। माइनस का मतलब है डिक्रीज 1%, लेकिन सवाल में डिक्रीज ऑलरेडी पूछा है तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो ऑलरेडी हमारा आंसर 1% आ जाएगा। केवल वैल्यू पे बात करें, करेक्ट। अगर ये भी पूछा होता कि डिक्रीज कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे आने वाला माइनस साइन हमको ये भी बताता दिस विल बी अ डिक्रीजिंग वैल्यू इन G, करेक्ट। चलिए, आपको ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी कराया गया, इसमें मैंने सिखाया कि अगर ये दोनों रेशियो ले और ये दोनों रेशियो ले, तो रेशियो अगर सेम आ जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो आपको लिखा, यहाँ पे L1 का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये 40 है तो इधर लिख दिया 60 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर ब्रिज में कन्वेंशनली 1 मीटर का ही वायर होता है। तो 4/40 इक्वल टू Q/60, इसको सॉल्व किया तो Q का वैल्यू आया 6 ओम,
ये तब आया जब बैलेंसिंग पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे। बोल रहा नाउ इफ एन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ x ओम इज एडेड टू 4 ओम इन सीरीज, तो 4 ओम था उसमें x ओम और ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 4 + x। q का वैल्यू q ही रखा और यहां पे लिखा बैलेंस पॉइंट्स 80 सेंटीमीटर हो गया शिफ्ट होके। तो डायग्राम ऐसा बन गया होगा कि ये ऐसे शिफ्ट होके यहां पे चला गया बैलेंस पॉइंट। 80 सेंटीमीटर इधर है तो 20 सेंटीमीटर इधर है, ये q है जिसका वैल्यू हमने 6 निकाल दिया, ये 4 + x है। तो हमारा आंसर हो गया 4 + x / 80 = 6 / 20। 20 80 कैंसिल किया, 4 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई किया, 4 + x = 6 4 = 24, 4 उधर माइनस कर दो, x का वैल्यू आया 20 ओम। फिजिक्स में तो सही होने ही है भाई, होने ही है फिजिक्स में सही। ये सब रेशो वेशो सब कर चुके हैं भैया। चलो, टेम्परेचर ऑफ 7 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज रेज्ड बाय 40 K, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। केवल एक ही फॉर्मूला है जो किसी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा NCV ΔT है। n का वैल्यू 7 मोल, CV का वैल्यू 3R/2। 3 क्या है? 3R/2 में वो मोनो एटॉमिक गैस है इसलिए लिख दिया। डायटॉमिक होता तो 5R/2 लिख देते और पॉलीएटॉमिक होता तो 6R/2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी हिसाब से बदलती है। डेल्टा टी की जगह लिख दिया 40, 40 से ये कैंसिल किया 20 हो गया, 20 × 360 हो गया, यहां मल्टीप्लाई किया तो 420R। सवाल में पूछा R के अलावा क्या x R है, x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू 420। ठीक है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन कमिंग आउट पर यूनिट टाइम ऑफ सोर्स दैट एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर। हमको पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है hc/λ। कन्वेंशनली या पॉपुलरली hc का वैल्यू हम लिख देते हैं 1240 डिवाइडेड बाय 900 कर देंगे, ये 1.3 के आसपास आ जाएगा, 1.3 के आसपास आ जाएगा, थोड़ा देख लेना। और यहां पे पावर दिया हुआ, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, उसका वैल्यू दिया है 100 वॉट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया भाई। फिर हमने लिख दिया कि अच्छा इंटेंसिटी दिया है, तो पावर हो गया इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो पावर 100 वॉट हो गया भाई। वॉट का मतलब है जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। उसको हमने लिख दिया n फोटॉन्स पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। एनर्जी को हमने 1.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दिया और थोड़ा सॉल्व किया तो ये 45 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। ये 45 वाला नंबर ही हमें चाहिए, एक्चुअली 45.4 के आसपास आ जाएगा, हम लोग इंटीजर वैल्यू पकड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं तो हम एक्चुअल वैल्यू पे भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है इस सवाल में लेकिन सॉल्व हो जाता है। In the circuit shown, the potential drop across the dipole is 60 volt. नहीं, डायोड बोला, डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। अगर इस लूप को देखो तो ये 60 वोल्ट है तो ये भी 60 वोल्ट होगा। अगर 60 वोल्ट को मैं 10 किलो ओम से डिवाइड कर दूं तो इस रास्ते में करंट 6 मिली एम्पियर हो जाएगा। यहां पे पैरेलल ब्रांचिंग लगा, ये 60 वोल्ट है तो इसको भी 60 वोल्ट मिल जाएगा, पैरेलल में ना भाई। इस 60 वोल्ट को 60 के से डिवाइड करेंगे तो यहां करंट 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। अगर इधर से 6 मिली एम्पियर करंट आया और इसमें 1 मिली एम्पियर गया तो डायोड से कितना पास करेगा? ये जेनर डायोड है, इससे 5 मिली एम्पियर करंट पास करेगा। इधर से आया 6 और आगे गया 1 तो इधर गया 5। यह आपने करंट यहां पे KCL लगा दिया है। लेकिन आप देख लो, बोल रहा डायोड का वोल्टेज 60 है। डायोड अगर 60 और 120 की बैटरी लगाया तो 120 में से 60 इसको मिला तो इसको कितना मिला? 60 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो
इसका 60 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 6 मिली एम्पियर करंट हो गया। 60 डिवाइड बाय 10 6 मिली एम्पियर करंट हो गया। और ये 60 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, यहाँ की रेजिस्टेंस भी 60 है और वोल्टेज भी 60 है, तो यहाँ 1 यहां जाएगा, तो यहां से 6 आया, 1 आगे, तो इधर से 5 निकल लिया। बहुत अच्छा। अ ड्रॉप ब्रेक्स, अब बड़ा सा ड्रॉप है, वो छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉप में ब्रेक हो गया। तो हमने बोला बड़े रेडियस का वैल्यू आर है। यहां पूछा आर इज द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, तो छोटे छोटे रेडियस में आप कहेंगे एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू 729 छोटे ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर है। तो उससे स्मॉल आर का वैल्यू, ये क्यूब रूट ऑफ 9 है, ये इसका क्यूब रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो r बाई 9 हो जाएगा। फिर जो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल है एक ड्रॉप की, तो 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। एक ड्रॉप है रेडियस आर का, लेकिन बाद की पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो 729 ड्रॉप्स है और हर का रेडियस स्मॉल आर है विच इज r बाई 9, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब आप फाइनल में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये ना, ये 81 है, कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 पाई आर स्क्वायर टी हो गया, और इनिशियल वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर टी हो गया। तो बोल रहा है इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो डेल्टा यू करेंगे तो 36 में से 4 माइनस किया 32 पाई आर स्क्वायर टी कर दिया। यहां पे देखा तो n लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर टी के साथ, तो n का वैल्यू 32 हो गया। ठीक है, अब यहां पे EM वेव इफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक कंपोनेंट इतना दिया हुआ टेस्ला में, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बताओ। स्पीड ऑफ लाइट यहां पे हम मान लेते हैं वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट को 3 इंटू 10 रेस्ट पर 8 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। तो हमारा अगर वेक्टर में पूछा होता तो E इज इक्वल टू बी क्रॉस सी कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू B इंटू सी से ही निकाल देंगे। B का वैल्यू दिया 2 इंटू 10 का पावर -8 और इसका वैल्यू 3 इंटू 10 रेस्ट पर +8। सॉल्व किया तो 3 इंटू 6 6 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया। मामला इजी है, मामला खत्म हो गया। तो अभी हम लोग ने जो सवाल देखे वो आज के सेशन के थे, कुछ एक दो क्वेश्चंस कम ज्यादा होंगे और कुछ की वैल्यूज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, लेकिन क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं। फॉर्मूले पे ध्यान दो, एनसीईआरटी चाहो तो एक बार पढ़ो, लेकिन नोट्स एक बार जरूर पढ़ो जिसमें हमने जो भी सवाल किए हैं या हमने जो भी मतलब जो भी एग्जाम्पल्स किए हैं वो एग्जाम्पल्स को, फॉर्मूले को एक बार देख लो। आई होप आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा होगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, और एडवांस की तैयारी भी करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।